जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस की, तो उसमें तीन चीजें कवर होती हैं. फर्स्ट इज द एनवायरमेंटल एनालिसिस. This environmental analysis is divided into two parts. You have your external environmental analysis, and then you have your internal environmental analysis. इस पे थोड़ी देर में बात करता हूं. दूसरा हिस्सा जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस का है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ योर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज. And naturally this is very much part of the internal analysis. और मेरे नजदीक आइडेंटिफाई बाद में भी करूंगा, इस बार के लिए ये बहुत अहम हिस्सा है. दैट इज योर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी डिटर्मिनेशन. और तीसरा हिस्सा है दैट इज योर एक्सपेक्टेशन एंड पर्पसेस. जहां तक स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस का है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस से व्हाट आर द थ्रेट्स इन द इंडस्ट्री एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज. ये बात जरा बहुत तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि अक्सर मैंने ये राइटअप्स में एक बहुत कंसेप्चुअल गलती करते हुए स्टूडेंट्स को देखा है. जब हम एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहे हैं तो याद रखिए ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, ये इंडस्ट्री का है. द थ्रेट्स आर फॉर माय कंपनी एंड दे आर इक्वली एप्लीकेबल टू द इंडस्ट्री, अदर कंपनीज, अदर कंपैटिटर्स इन द इंडस्ट्री. तो थ्रेट्स लिखते हुए कभी भी अपने एक्सप्रेशन को माइक्रो लेवल पर ना लेके जाएं, बिकॉज द थ्रेट्स आर विच आर इन द इंडस्ट्री. इसी तरह जो अपॉर्चुनिटीज हैं एक्सटर्नल एनालिसिस से, वो भी मेरी कंपनी के लिए भी उतनी है और मेरे जो कंपैटिटर्स हैं उनके लिए भी उतनी ही है. सो जो एक्सटर्नल एनालिसिस जिसमें आज हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, कौन कौन से मॉडल्स हैं, उसमें अपने एक्सप्रेशन को आपने माइक्रो लेवल पर नहीं लेके जाना. इनिशियली मैक्रो लेवल से स्टार्ट करना है कि अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द इंडस्ट्री, और फिर उसको बेशक ट्रिकल डाउन करें टू द माइक्रो लेवल. इसके बाद जो इंटरनल एनालिसिस है वो हम ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज के मुनासबत से करते हैं. दैट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस. ये याद रखिए, ये इंटरनल एनालिसिस है और ये माइक्रो लेवल पर है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर है. या मैं जरूरी समझता हूं कि स्ट्रेंथ्स को भी आइडेंटिफाई कर दूं. किसी चीज का होना हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, उसका होना और हमारे कंपैटिटर्स से बेहतर होना स्ट्रेंथ है. ये जब सवाल स्वॉट एनालिसिस पर आता है और स्टूडेंट से रिक्वायर किया जाता है स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना, तो वो किसी चीज को अपने पास हो हमारे पास तो उसको भी स्ट्रेंथ में लिख देते हैं. वो स्ट्रेंथ नहीं है. वो स्ट्रेंथ उस वक्त है व्हेन यू थिंक इट कैन डिलीवर अ कंपेटिटिव एडवांटेज. आज चैप्टर 4 पे जब मैं रिवीजन करवाऊंगा तो आप देखिएगा स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का असल माने क्या है. एंड दैट इज इट शुड बी एबल टू गिव मी अ कंपेटिटिव एडवांटेज. और स्ट्रेंथ वो है वीकनेस वो है जो ये नहीं कि हमारे पास नहीं है. इट इज लाइकली टू अफेक्ट आवर कंपैरेटिव एडवांटेज. समथिंग व्हिच इज, वी मे हैव समथिंग बट इट इज नॉट एज गुड एज it is likely to give us a comparative advantage. The other strength may be our weakness. तो बेटा आपने अभी ज्वाइन किया तो मैं इसमें बता दूं अभी कि इस वक्त हम एक क्विक शॉट कर रहे हैं फर्स्ट 6-7 चैप्टर्स का आज रिवीजन कर रहे हैं. सो जहां तक स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस है, जैसे मैं चैप्टर 1 की रिवीजन स्टार्ट करूंगा, इसका मेन पर्पस है कि हम डिटरमिन कर सकें स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है. इसके बाद है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस. हमने अपने लिए डिफरेंट ऑल्टरनेट जो स्ट्रेटेजीज ऑप्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, और हमने ये
3 लेवल पर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस क्रिएट करनी होती हैं. At the corporate level, then the business level strategies, and the third is your regard with respect to development directions and methods. तो हमने इनके भी डिटेल में जाते हैं. तो 3 लेवल्स या 3 एस्पेक्ट्स से स्ट्रेटेजिक चॉइसेस क्रिएट करनी है. What do you mean by corporate level? इस पर हमने लिए अपने ऑप्शंस जनरेट करनी है. Which products or services you should deal in. और दूसरी इस लेवल पर डिसीजन है, what type of operation you want to have. Do you want to have a domestic operation? Or do you want to go for multinational operations? Do you want to go for international operations? Or do you want to go for global operations? ये सारे मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं. मैं सिर्फ एक आइडिया आपको यहां देना चाह रहा हूं. I just said कि आप इस लेवल पे डिसीजन लेते हैं कि आप किस तरह का, किस जियोग्राफिक मार्केट में काम करना चाहते हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, or you want to act as a global company, or you want to act as a multinational company. अगर आप दूसरे मुल्कों में जाकर इन्वेस्ट करते हैं और वहां पर अपनी प्रोडक्ट को उसके मुताबिक आप कस्टमाइज करते हैं, दैट इज मल्टीनेशनल. और अगर आप दूसरे मुल्कों में जाके ऑपरेट करते हैं बट यू प्रोड्यूस वन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट फॉर एवरीवन, नाउ दैट इज रिफर्ड एज अ ग्लोबल प्रोडक्ट. सो कॉर्पोरेट लेवल पर आप जो डिसीजंस ले रहे हैं, व्हिच प्रोडक्ट्स, व्हिच सर्विसेज, एंड यू आर ट्राइंग टू टेक अ डिसीजन व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशंस यू वांट टू हैव, डोमेस्टिक, मल्टीनेशनल और व्हाट. बिजनेस लेवल पर आप जो स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस अपने जनरेट करते हैं, जो पोर्टेड जेनेरिक स्ट्रेटेजीज पर है, दैट इज हाउ वुड यू लाइक टू compete? Would you like to compete on cost leadership, or would you like to compete on the basis of differentiation? How do you want to, how do you intend to compete in the market? दो ही बेसिस हैं. हमने कल भी जो कुछ सवाल किए उसमें भी इनका जिक्र आया था. Either you want to differentiate your product from others, or you want to sell it on the basis of cost leadership. यहां जरूरी है ये बात समझना, low cost does not necessarily mean cost leadership. Cost leadership means its ability to produce a product at a cost less than your competitors. जहां तक डेवलपमेंट डायरेक्शन है, तो हमारे पास जो मेथड है वो है either we go for organic growth or we can go for inorganic growth. अगर हम ग्रो कर रहे हैं using our internal sources, so now that is organic growth. But if you want to grow through these strategic alliances, mergers, acquisitions, now that is called as inorganic. So direction जो है उसमें पहली जो है, what are the methods? How do you want to grow? That is internal growth, organic, or external growth, that is inorganic growth. As far as direction is concerned, आज हम इसकी डिटेल में भी आगे जाएंगे. That is hands off. अभी मैं इनको सिर्फ टच करूंगा, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आगे हम जाएंगे. Hands off is giving me the direction of growth. और हमारे पास 4 डायरेक्शन. Either we can go for market penetration, product development, market development, or we can go for diversification. Please do not confuse this diversification with differentiation. Differentiation is to have products and processes different from others. Diversification has a different concept. We'll discuss in a while. तो जहां तक मेथड है, हमारे पास ऑर्गेनिक ग्रोथ है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ है. जहां तक डायरेक्शन है, हमारे पास एनसॉफ के मुताबिक 4 डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ अवेलेबल है. इसके बाद जब स्ट्रैटेजी की सिलेक्शन का वक्त आता है, मैं साथ साथ ये बताता चला जा रहा हूं कि आगे चल के ये चैप्टर्स क्योंकि डिटेल में आना है, तो इसका मैं सिर्फ अभी आइडेंटिफाई कर रहा हूं. वी हैव अ टेक्निक जो हम आज के लेक्चर के तकरीबन एंड पर करेंगे, दैट इज SAF, suitability,
acceptability and feasibility. इन तीनों पैरामीटर्स पर हम अपनी सारी स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को वैल्यूएट करते हैं और फिर हम उसमें से एक को सिलेक्ट करते हैं. Once a strategy is selected, now you have to go into action. You have to implement that strategy. तो आपके पास अब तीन मेजर तरीके हैं, जो स्टेप्स हैं to implement that strategy. First, you may have to bring a change in your organizational structure. You may have to change from functional to divisional. You may have to change from functional to matrix. और अगर आप स्टारबक्स या प्रॉक्टर एंड गैम्बल के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को देखें तो उसमें आपको तीनों स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. मैं उसका जिक्र अभी करूंगा जैसे हम उस चैप्टर में पहुंचते हैं. वी हैव फंक्शनल स्ट्रक्चर आल्सो, वी हैव डिविजनल स्ट्रक्चर्स एंड वी आल्सो फाइंड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इन स्टारबक्स एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल. कहने का मकसद ये है कि स्ट्रेटेजी के मुताबिक अब आपको अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लानी पड़ेंगी. एंड सो यू हैव टू ब्रिंग चेंजेस इन योर processes. You may have to go for BPR, that is business process restructuring, a total radical change in your processes. आज हम जो automations करते हैं, इस automations का मकसद BPR है, that is business process restructuring, a radical change in your processes, which is expected to do what? Which is expected to bring a quantum improvement in your performance. Not a small. BPR का मकसद ही radical change लाना है और एक quantum improvement लेके आना है अपनी performance के अंदर. So what I'm trying to say at this stage, at this level, is that strategy implementation may require changes in your processes. Now, when I'm saying change, that is not that simple. ये आपने अगर जो लोग BMBS के रूट से आ रहे हैं वहां पर उन्होंने पूरा एक चेंज मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ा था. इन्होंने जब इस स्कीम को चेंज किया है तो बिल्कुल डीटो वहां से उस चैप्टर को उठाकर एसपी में डाला है. हाउ टू ब्रिंग चेंज. आपके पास इसमें फोर्स फील्ड एनालिसिस है, लिवेंट का मॉडल है और दूसरे मॉडल्स आपके पास हैं. बताना यहां मकसद ये है you need a proper effective change management process. जो ऐसा कल्चर जो चेंज को एक्सेप्ट कर ले. एक ब्यूरोक्रेटिक कल्चर चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता. सो आपको चेंज लाना है स्ट्रक्चर में, प्रोसेसेस में, कल्चर में, और इस सारे के लिए यू गॉट टू हैव अ वेरी इफेक्टिव प्लान्ड चेंज मैनेजमेंट. तो बेटा ये वो तीन स्टेप्स हैं जो हमने यहां पर देखे, जो जॉनसन एंड शोर्स ने आइडेंटिफाई किए फॉर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन. इसके बाद अगर आप इस डायग्राम को यहां देख रहे हैं, इस सारे के लिए जैसे मैंने अभी बताया, यू हैव टू ब्रिंग प्रोसेस चेंज, यू हैव टू अडॉप्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आपने एग्जाम प्रैक्टिस के डिफरेंट सेशंस में साथ डिटेल में किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. स्ट्रेटेजी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट स्टेप्स एंड दो स्टेप्स आर योर प्रोजेक्ट्स. किसी भी स्ट्रेटेजी की इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन बुनियादी तौर पर डिपेंड करती है हाउ गुड इज योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. You got to complete all your projects, which are the steps in your strategy implementation, on time. Only then you can see that your strategy will be effectively implemented. बेटा ना तो strategic position analysis से हमारी कंपनी में कोई बेहतरी आनी है, ना ही strategic choices से हमारी कोई बेहतरी आनी है. वो सारा प्लानिंग है. अगर इंप्रूवमेंट आनी है तो वो आखिरी स्टेप है, that how effectively we implement the strategy. और उसकी सारी सक्सेस किस पर डिपेंड कर रही है? this one thing that is called as project management. अब
इस स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में जहां हमने बात की थी एक्सपेक्टेशंस की और पर्पसेस की, बेटा वी हैव टू स्टार्ट विद फर्स्ट डेवलपिंग अ हायरार्की ऑफ आवर टारगेट्स। जब ये बीएमएस के मॉड्यूल में था, फॉर्म में था ये सब्जेक्ट, तो ये हिस्सा बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनर टेस्ट कर रहा था। अभी तक जब ये स्कीम चेंज हुई है, समहाउ एग्जामिनर ने इसकी तरफ तवज्जो अभी तक नहीं दी है, लिहाजा वी शुड बी वेरी केयरफुल दैट इट मे कम बैक अगेन। मैं उसको भी आइडेंटिफाई कर रहा हूं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए सेट करती है योर मिशन एंड द विजन स्टेटमेंट। फर्क क्या है दोनों में? मिशन इज व्हाट यू आर टुडे and vision is what you hope your organization to be in the future. What are your current products? Mission. What new products you want to deal in? That's your vision. What are your current markets? That's your mission. What new products you would like to deal in or new markets you would like to go in is your vision. ये याद रखिए, इस मिशन और विजन को देखकर हम बनाते हैं अपने कॉर्पोरेट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। अब वो एग्जामिनेशन की अप्रोच क्या थी, फिर उसको गौर से सुनिए। दोनों तरीकों से ये सवाल आया कि अगर ये मिशन स्टेटमेंट है तो इसके लिए कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर दीजिए, या आपको कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स दे दिए और कहा गया इससे मिशन स्टेटमेंट बना दो। तो दोनों तरीकों से एग्जामिनर इस चीज को टेस्ट करता रहा है और आपकी बुक के अंदर ये दोनों एग्जाम्पल्स के तौर पे मौजूद है। मिशन से कन्वर्ट करना इनटू कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स और कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स से वर्क बैक करना इनटू मिशन स्टेटमेंट। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि उन एग्जाम्पल्स को जरूर रिव्यू करें कि किस तरह हम ये कन्वर्जन्स करते हैं फ्रॉम मिशन टू। अब anybody in the class, beta, what is the difference between goals and objectives? मिशन के बाद बनाते हैं हम गोल्स और गोल्स को हम फिर कन्वर्ट करते हैं into objectives. What do you think is the difference? Shabash. Your goals are journal statements or targets, like maximization of shareholders' wealth or to be a market leader. They are journal statements of targets. जबकि जब हम उनको specific targets में convert करते हैं, now that is called as my objective. My goal could be maximization of shareholders' wealth. What could be objective? Double the share price in so many years. So I have my mission. Mission is supported by goals, the general statements, and then goals are converted into objectives. अब एक बात यहां तवज्जो तलब है, आखिर ये हायरार्की क्यों बनाई? हमने सीधा गोल्स को ही न्यूमेरिकल क्यों ना कर दिया, गोल्स को स्पेसिफिक क्यों ना कर दिया? बात यह है बेटा कि हमारे इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है वो बड़ी डायनामिक है, वो मुस्तकिल चेंज हो रही है। हमने ये अपने लिए फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर ली कि अगर एनवायरनमेंट चेंज हो तो मिशन को जब तक मुमकिन हो कांस्टेंट रखो। कर सकते हैं चेंज, लेकिन मुमकिन हो तो इसको लॉन्ग रन रखो। चेंज करना है तो गोल्स में कर लो, अगर गोल्स को भी कांस्टेंट रखना है तो ऑब्जेक्टिव्स को कर लो। जिस लेवल पर आप तब्दीली लाना चाहते हैं, पहले देखें किस लेवल की चेंज है आपके एनवायरनमेंट में। डू यू नीड टू टोटली चेंज योर मिशन स्टेटमेंट, और द चेंज इज कि आप मिशन को कांस्टेंट रखें एंड जस्ट चेंज योर गोल। और अगर आप कहते हैं नहीं, गोल को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, वही रखें मैक्सिमाइजेशन और शेयर होल्डर्स वेल्थ, तो अब ऑब्जेक्टिव में तब्दीली ले आए। तो आपने अपने लिए फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर ली, क्या चीज देखकर असेस किया व्हाट इज द स्कोप और द डायनामिक्स ऑफ माय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Nokia started off by producing paper pulp. That was their main product. उनकी कंपनी का प्लांट था ही उस रिवर के अगेंस्ट, which is named as Nokia. From there it got its name as Nokia.
Then they changed their scope to produce rubber products. And from there, they went into this communication industry. So you see, the company is changing its mission statement. Intel started off by producing capacitors for fans. And then they realized the environment has changed. And they all together changed their mission and started producing macro processors. And from macro processors, they went into microprocessors. I'm trying to give you an example with the dynamics in your environment. The organizations are they are changing either their mission or they're changing their goals. And if they think both can be kept constant, they can change their objective. तो मैं आपको mentally prepare करना चाह रहा हूं कि एग्जाम में उसका किस किस्म का सवाल आ सकता है. वो अगर पहला सवाल आपको एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस दे दे, तो दूसरा आपको दे सकता है कि बताइए इससे मिशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है. अगर मिशन नहीं तो बताइए गोल्स में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऑब्जेक्टिव्स में क्या इफेक्ट पड़ सकता है. तो बी प्रिपेयर्ड विद दिस टाइप ऑफ एंड प्लीज डू रिव्यू दोस क्वेश्चंस. यहाँ जो लोग बैठे हैं मैं उनको ब्रेक में आइडेंटिफाई कर दूंगा where those examples are so that you can review those questions. अब जब हम एक्सपेक्टेशंस उसकी बात कर रहे हैं तो बेटा फिर यहाँ पर मैंडेलोस का मॉडल आता है फॉर स्टेकहोल्डर्स मैपिंग. What are the different categories of stakeholders? Anyone? So which they are? How many are there? There are 3. Broadly speaking, 2. But beta, we divide the second one, external, into 2. Okay? I'm explaining. We have internal stakeholders and we have external. Internal कौन है जो directly company की management में involved है, like the directors, like we have the executive managers, employees, और naturally जो organization के बाहर हैं like suppliers, banks, customers, entities, they are your external. लेकिन external में 2 तरह के हैं. एक वो है बेटा जिनसे हमारा एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, लाइक सप्लायर्स. अब ये कहलाते हैं कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स. और जिनसे हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, दे आर सिंपली टाइटल्ड एज एक्सटर्नल. सप्लायर इज माय कॉन्ट्रैक्चुअल, कस्टमर इज माय कॉन्ट्रैक्चुअल, बट द जर्नल कम्युनिटी, ठीक है, or the local community, that is my external. The government is my external stakeholder. It is not connected because I don't have any contractual relationship with the government. तो हमारे पास 2 broad और 3 categories हैं stakeholder. What is this Mandelow's mapping doing? हमारे पास scarce resources हैं और उन scarce resources को देखते हुए ये स्टेक होल्डर्स को क्लासिफाई कर रहा है, कैटेगराइज कर रहा है, और हमारी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज को सेट कर रहा है. व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल प्रायोरिटीज? दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. किनको मैंने ज्यादा अहमियत देनी है और किनको कम. हम ये जो स्टेक होल्डर्स की कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, इनको 2 बेसिस पे कर रहे हैं. लुक एट दिस मैट्रिक्स. और जब भी मैट्रिक्स यूज होता है, वी नो देयर आर 2 एक्सेस. एक एक्सेस पर हम on top, I'm forgot my digital pen, so I cannot annotate here. On the top, we have the interest. And this will also not work there. We have the interest of the stakeholders. And on this other axis, we have the power of the stakeholders. अब interest से क्या मुराद है? Interest is how willing the stakeholder is to influence organizational strategies to protect its interest. यहाँ important लफ्ज है willingness. कितना willing है stakeholder कि वो organization की strategy को influence करना चाहेगा अपने interest को protect करने के लिए. लेकिन याद रखें, willingness एक और चीज है and ability to actually do it is different.
and that is called as power. How much power the stakeholder has to actually influence the strategy is the power on the other axis. So interest is willingness, and power is the authority of the stakeholder to actually influence the strategy. Shareholders, do they have voting rights? Bolo beta, they have voting rights. Can they vote on their dividend decisions? No. So they have, but they have very limited power. But they have very strong willingness. Why? They would certainly like to protect their interest for capital gain and dividend. But as far as their power is concerned, they have very little power. Yes, combined, they may have a strong power. But individually, they don't have that power. Or a small segment of shareholders, they don't have that power. तो shareholders कौन है जिनकी interest तो बहुत है लेकिन उनकी powers कम है. तो interest और power की basis पर ये matrix जो है वो हमारे stakeholders को categorize कर रहा है. Interest could be high or low, and so is the power. It could be high or low. इसमें बेटा हमारे सबसे ये इसका सवाल किस तरीके से आ सकता है कि आपको एक सिनेरियो दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आइडेंटिफाई कर दो who are our stakeholders and what do you think will be our strategy towards those stakeholders. इसमें सबसे सेंसिटिव है, देखिए यहां पर, that is category D. कैटेगरी डी स्टेकहोल्डर्स कौन है जिनकी पावर भी हाई है और इंटरेस्ट भी हाई है. टेक द एग्जांपल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, योर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. दे आर द वन हु आर टेकिंग डिसीजंस. दे कैन रियली इन्फ्लुएंस योर डिसीजन. टेक द एग्जांपल ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन अ सॉफ्टवेयर हाउस. जो आपकी स्किल्ड लेबर है जिस पे आप टोटली डिपेंडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, दे आर ऑलवेज योर की प्लेयर्स. इनके बरक्स कैटेगरी ए में देखें, वो है जिनकी पावर्स भी लो हैं और इनका इंटरेस्ट भी लो है. टेक द एग्जांपल ऑफ अनस्किल्ड लेबर, द जर्नल कम्युनिटी. दे हैव लो पावर्स, लो इंटरेस्ट. और हमारी स्ट्रेटेजी इनकी तरफ क्या है इस पर बात करते हैं अभी. देन यू हैव कैटेगरी बी. ये वो है जिनका इंटरेस्ट तो हाई है लेकिन के पास पावर्स कम है. और कैटेगरी सी वो है जिनके पास इंटरेस्ट लो है लेकिन पावर्स हाई है. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मीडिया, प्रेस. जानना पहचान में तेरा मेहमान. हाई इंटरेस्ट बट वेरी स्ट्रॉन्ग पावर्स. दे कैन प्रोपोगेट. They can propagate against the organization and can really hurt the goodwill of. तो हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं. अब आइए हमारी स्ट्रेटेजी क्या है. बहुत तवज्जो से सीक्वेंस से सुनना है, याद रखिएगा. जो कैटेगरी है मिनिमल एफर्ट, सबसे आखिर में देखेंगे इनको. जो कैटेगरी बी है इनका है कीप देम इन्फॉर्म्ड. व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स? कीप द स्टेक होल्डर्स इन्फॉर्म्ड. यही है ना? ठीक है, ये वही है कि इनको जस्ट कीप देम इन्फॉर्म्ड, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड फ्रॉम एवरी डायमेंशन. अब जो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट वो क्या है? गिव देम अ कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस. सो कीप देम वेरी वेल इन्फॉर्म्ड. अगर ये इन्फॉर्म्ड रहेंगे दे विल बी ओके. कैटेगरी सी, दे हैव टू बी केप्ट सेटिस्फाइड. लफ्ज देखिए, पहला था कीप देम इन्फॉर्म्ड फॉर बी. सी, दे हैव टू बी केप्ट सेटिस्फाइड. कैटेगरी बी का जो स्टेक होल्डर है, इन्हें हमने कंपनी की परफॉर्मेंस के मुतालिक अपडेटेड रखना है. देखो, ये हमारी स्ट्रेटेजी थी, ये हमारे रिजल्ट्स आए. लुक, दैट स्ट्रेटेजी इज जस्टिफाइड. इनको हमने इन्फॉर्म रखना है स्ट्रेटेजी को जस्टिफाई करने के लिए. ठीक है, मैं एक तो फिर बोलता हूं, कैटेगरी बी का जो स्टेक होल्डर है, इन्हें हमने इन्फॉर्म्ड रखना है, जस्टिफाई करना है. देखो, ये हमारी स्ट्रेटेजी थी, ये हमारे आउटपुट्स आए, सो आवर स्ट्रेटेजी वाज जस्टिफाइड. इससे आपका इंटरेस्ट हर्ट नहीं हुआ. और कैटेगरी सी कौन है? इन्हें हमने सेटिस्फाइड रखना है. अब जरा सुनना गौर से. इन्हें हमने स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने से पहले एंगेज करना है. बी को एंगेज किया स्ट्रेटेजी के रिजल्ट्स आने के बाद. सी को एंगेज करना है स्ट्रेटेजी की इंप्लीमेंटेशन से पहले एंड कीप देम सेटिस्फाइड. क्या? लुक, दिस इज आवर स्ट्रेटेजी,
and this is how it's going to work, and it will not likely to affect your interest. तो देखो जो engagement point है strategy formulation में वो different हो रहा है. एक को हम outputs बता रहे हैं और एक को हम strategy implement करने से पहले engage कर रहे हैं कि ये हम करने जा रहे हैं, देख लो इससे आपके इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं होंगे. एंड हु आर डी की प्लेयर्स, इन्हें हमने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में शामिल करना है. तो देखो एंगेजमेंट पॉइंट डिफरेंट हो गया. की प्लेयर्स स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. सी को हमने स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन से पहले एंगेज करना है और बी को हमने इन्फॉर्म रखना है रिगार्डिंग द आउटपुट ऑफ द स्ट्रेटजी. और ए, ये शायद घर का जो सबसे बड़ा होता है वो होता है जी, जस्ट वील टॉक अबाउट देम, कि इनको सबसे आखिर में देखें. तो बेटा मैंडिलोस का मॉडल आता है स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन में जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस की. व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ माय स्टेक होल्डर्स, हाउ वी आर गोइंग टू सेफगार्ड दोस एक्सपेक्टेशंस. somehow जब से ये एसपीएम है तो ये पोर्शन अभी टोटली नेग्लेक्टेड है. पहले ये टेस्ट हो रहा तो जब बीएमएस के मॉड्यूल में था, अभी उस वक्त से ये इग्नोर्ड है, ये हिस्सा अभी तक टेस्ट नहीं हुआ. और एवरी पॉसिबिलिटी, ये मिशन स्टेटमेंट, गोल्स, मैपिंग ऑफ द स्टेक होल्डर्स, somehow it is important. एंड पे बात करते हैं. फिर इस चैप्टर के एंड पर बेटा एक टेक्निक है फ्यूचर बेसिंग स्टडी फॉर्मुलेशन के लिए. इस पर पूरा एक पार्ट बड़े आराम से एग्जामिनर सिनेरियो में इंजेक्ट कर सकता है. Now what is future basing? Future basing is living in the future and then working backwards towards now. मसलन यहां ये देखिएगा, हमने यहां पर एक वेबसाइट लॉन्च करनी थी और हम देखें यहां से स्टार्ट करें बिल्कुल एंड पर. दैट इज, हमने वेबसाइट लॉन्च कर दी है 5 months ago. दिस इज वी आर लिविंग इन फ्यूचर एंड आई अज्यूम दैट आई एम स्टैंडिंग इन द फ्यूचर एंड आई एम सेइंग कि मैंने आज से 5 महीने पहले अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है, जिससे 86% जो है मेरी जो सेल्स हैं नाउ दे आर गोइंग थ्रू वेबसाइट्स. आई एम लिविंग इन द फ्यूचर कि जब मैं ये वेबसाइट लॉन्च कर दूंगा तो उसमें मेरी 86% सेल्स पे चली जाएगी. लेकिन देखो एक्सप्रेशन क्या है. आई से आई एम लिविंग इन फ्यूचर, माय वेबसाइट हैज बीन लॉन्च्ड 5 months ago, it is recognized and 86% of my sales have gone through that website. Now we will work backwards and set the milestones. That is 11 months ago, 97% of customer satisfaction level was achieved. वो जो विजिटर्स आ रहे थे मेरी वेबसाइट पे, 97% they showed an achievement. That's a milestone achieved. उससे पीछे गए 12 months ago, successful launch of the website. और उससे 14 months ago, which is today actually, I hired a competent project manager to install this website. So that means 14 months from now, I'm going into the future. And then working backwards, I'm setting my milestones. कि जी आज 14 महीने से, अब अगर मैं आज यहां खड़ा हूं तो मैं कहूंगा 14 months from here, I will launch my website. What is the first step I should do? Hire the project manager. Then from 12 months from now, from 2 months from now, you should launch this website. And then gradually we move towards this future. So what is future basing saying? Future basing saying, go and live in future. What do you want to achieve? And then work backwards. Which milestones you must have covered to get to this future? और फिर जब आप रियलिटी चेक करें तो फिर आप रियलिटी चेक जो आखिरी स्टेप है फ्यूचर बेसिंग का, फिर देखें क्या आपने वाकई वो माइलस्टोन अचीव किया या नहीं किया. अगर माइलस्टोन अचीव किया है तो यू आर हेडिंग प्रॉपरली टुवर्ड्स योर फ्यूचर. क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें? तो इसमें पहला स्टेप है एक
कंपेलिंग विजन एस्टैब्लिश कर लो. विजन इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर. दूसरा क्या है? वर्क बैकवर्ड्स एंड सेट द माइलस्टोन्स. And then the reality check. Reality check is what resources you require and keep on achieving those milestones. If those milestones are covered, that means you are heading in the right direction, taking you to the right direction in the future. So I hope this concept is clear. What is future basing? कोई सवाल यहाँ पर आपका? ठीक है. तो ये neglect नहीं करना, इस पर बड़े आराम से वो 3 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है कि व्हाट इज फ्यूचर बेसिंग. अगर वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन को टच कर रहा है तो उसमें वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द फ्यूचर बेसिंग अप्रोच. दैट इज वी स्टार्ट फ्रॉम वे वांट टू अचीव एंड देन वर्क बैकवर्ड्स टू द माइलस्टोन्स एंड देन इन रियलिटी चेक कीप ऑन चेकिंग वेदर यू हैव अचीव्ड दोस माइलस्टोन्स और नॉट. इसके बाद बेटा हमारा ये दूसरा चैप्टर शुरू होता है विच इज ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट. और जो अभी एंड पर मैंने आपसे बात करनी है, ये पोर्शन पिछली जो अटेम्प्ट्स हैं एसपीएम में अभी तक टेस्ट नहीं हुआ. सो देयर इज एवरी लाइक्लीहुड, लेकिन एंड पर ही बात करेंगे कि पेपर की कंस्ट्रक्शन क्या बन सकती है. An organization is surrounded by layers of environment. It has its internal, then it has its competitive environment, and then it has its macro environment. Macro environment में आप दो मॉडल्स हैं, one is Pestle and the other is Porter's diamond model. I'm sure you know what is Pestle: political, economic, social, technological, environmental and legal. अब एग्जामिनर के एक जगह कमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर वो आपको पेस्टल एनालिसिस करने दे देता है, वो ये कहता है डोंट स्पेंड टाइम ऑन आइडेंटिफाइंग विच वन इज पॉलिटिकल और विच वन इज इकोनॉमिक, क्योंकि बाज दफा इनमें बहुत कम डिफरेंस होता है. वो कहता है इस पे ज्यादा वक्त ना जाया करो एज लॉन्ग एज द पॉइंट इज कवर्ड. तो केस स्टडी में इस पर ज्यादा अगर है क्लियर तो नेचुरली फिर तो कोई मसला नहीं है. बट इफ यू आर नॉट वेरी श्योर, इज इट शुड यू क्लासिफाई इट इन लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, क्योंकि इनमें बहुत बारीक फर्क है. डोंट स्पेंड टाइम ऑन दैट. स्पेंड टाइम ऑन इंक्लूडिंग एंड टेल मी वेदर इट इज अ थ्रेट और वेदर इट इज अपॉर्चुनिटी. आप में से कोई मुझे बताएगा हाउ विल यू डिफाइन अ थ्रेट? क्या होता है थ्रेट? When will you say that a factor, a political factor, is a threat? Sorry, जो हमें हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हिंडर करे. ठीक है, ग्रोथ से भी नहीं, इसको जोड़ना है आपने. एनी फैक्टर which restricts the organization from achieving its objective is called as a threat, and any factor, any change which helps us to achieve, that is called as a opportunity. तो पेस्टल में आपने जो वक्त सर्व करना है वो ज्यादा है कि आप उस फैक्टर को लें, फिर ये बताएं कि ये अपॉर्चुनिटी या थ्रेट है, और अब गौर से सुनिएगा, जस्टिफाई करें व्हाई इट इज एन अपॉर्चुनिटी. ज्यादातर मैंने राइटअप्स में देखा कि स्टूडेंट ने उसको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया, खत्म. भाई अपॉर्चुनिटी क्यों है, इसको एक्सटेंड करो, किस तरह ये आपको मदद देगी इन अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव्स. इसी तरह का थ्रेट है, थ्रेट या जो भी आ रहा है, उसको सिर्फ आइडेंटिफाई ना करो, उसको एक्सटेंड करो कि आप किस तरह साबित करते हो, जस्टिफाई करते हो कि इट इज अपॉर्चुनिटी और अ थ्रेट. Right from the first day, I have been saying that your answers should be conclusive. Most of us, we stop by saying it's an opportunity, it's a threat, that's it. अब आइए पोर्टर्स डायमंड मॉडल. बेटा पोर्टर्स डायमंड मॉडल क्या बता रहा है कि आज कुछ नेशंस को एक टोटल कंपैटिटिव एडवांटेज हासिल है ओवर अदर कंट्रीज इन अ सर्टेन इंडस्ट्री और इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट.
वो नेशनल एडवांटेज फिर ट्रिकल डाउन करता है टू माइक्रो लेवल टू ईच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर बोलता हूं मैं, व्हाट इज पोर्टर्स डायमंड मॉडल सेइंग, कि ये जो 4 फैक्टर्स हैं, ये किसी भी एक नेशन को, कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस, किसी भी नेशन को एक कंप्लीट एडवांटेज देता है ओवर अदर इकोनॉमीज, ओवर अदर नेशंस, और वो जो नेशनल एडवांटेज है फिर वो ट्रिकल डाउन करता है टू द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब ये नेशनल एडवांटेज किन 4 चीजों की वजह से बनता है? बेटा, इसमें पहला है फैक्टर कंडीशंस। 2 तरह के हमारे पास फैक्टर कंडीशंस हैं। फैक्टर्स मीन योर रिसोर्सेस। एक है बेसिक फैक्टर्स और एक है एडवांस फैक्टर्स। बेसिक फैक्टर्स किनको कहते हैं? दे आर योर नेचुरल रिसोर्सेस। और एडवांस फैक्टर्स कौन से हैं? विच आर मैन डेवलप्ड रिसोर्सेस लाइक टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये याद रखिए, एडवांस फैक्टर्स आर नेसेसरी टू एक्सप्लॉइट द बेसिक फैक्टर्स। ठीक है, जब तक टेक्नोलॉजी नहीं होगी, यू कैन नॉट मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर बेसिक फैक्टर्स। तो नेशनल एडवांटेज किस वजह से हासिल होता है? पहला इज योर फैक्टर कंडीशंस। व्हाट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक फैक्टर्स एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर advanced factors, which are man developed factors, which are necessary to exploit your basic factors. Like kabhi tha, we had a factor condition in textile, cotton crop. Ek national advantage tha because of our fertile land, that was giving us a national advantage in the production of cotton, and that was trickling down to the textile industry. दूसरा जो है, दैट इज डिमांड कंडीशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अब तो वो डिक्लाइन रिसेशन में है, लेकिन कुछ अर्सा पहले इट वाज वन ऑफ द बूमिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। इन सर्टेन केसेस इट वाज शोइंग अ ग्रोथ रेट ऑफ अबव 20%, बट स्टिल विद दैट ग्रोथ वी वर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट, वी वर नॉट एबल टू गो इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। क्यों? डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर क्या है? सबसे पहले, देयर शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग लोकल डिमांड। जो लोकल कस्टमर है वो क्वालिटी डिमांड करे। जब वो क्वालिटी डिमांड करेगा तो जो लोकल प्रोड्यूसर है वो उस लेवल की प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा विच विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट। लेकिन अगर लोकल प्रोड्यूसर ने डिमांड करनी है कि नहीं जी मेरे पास तो पैसा नहीं है, मुझे एक बेसिक प्रोडक्ट दे दें, तो उसकी डिमांड तो पूरी हो जाएगी, लेकिन नेशनल एडवांटेज हम कभी हासिल नहीं कर सके। लुक एट द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, व्हाट टाइप ऑफ कार द कस्टमर इज डिमांडिंग। वो प्रोडक्ट हम इंटरनेशनल मार्केट में नहीं भेज सकते हैं, तो लोकल प्रोड्यूसर तो ये कहेगा कि मैंने लोकल डिमांड को पूरा करना है, हेक विद द इंटरनेशनल मार्केट। तो पहली क्या है? देयर शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड इन द लोकल मार्केट। वो कस्टमर क्वालिटी डिमांड करे ताकि लोकल प्रोड्यूसर उस क्वालिटी की डिमांड को पूरा करने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट दे, ताकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट फिर इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड पर कंपीट कर सके। दूसरा क्या है? लोकल फर्म्स हैव टू बी इनोवेटिव, और इनोवेटिव हो टू द लेवल ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स। इनोवेशंस करें, फीचर्स लेकर आए, प्रोसेसेस बेहतर करें, ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें फॉर इंटरनेशनल मार्केट। सो बेसिक आइडियोलॉजी डिमांड फैक्टर की क्या है? डिमांड फैक्टर इज दैट द लोकल डिमांड शुड बी गुड इनफ टू मेक द लोकल प्रोड्यूसर competitive enough to go into the international market. तो बेटा पहला नेशनल एडवांटेज का फैक्टर क्या है? फैक्टर कंडीशंस, बेसिक एंड एडवांस। दूसरा क्या है? अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड कंडीशंस। तीसरा क्या है? दैट इज रिलेटेड इन सपोर्टिंग इंडस्ट्री। नाउ इट इज
वेरी सैड टू से हमारी जो इंडस्ट्री है उसने इंटरनेशनल डिमांड जो प्रैक्टिसेस है उससे बिल्कुल बरक्स ग्रो करने की कोशिश की। यहां देखिए टर्म क्या है, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री। हमारे मुल्क में गाड़ी बननी शुरू हुई और कहा गया कि लाइए इसको असेंबल करते हैं। आपने लोकल सपोर्टिंग इंडस्ट्री तो डेवलप की नहीं, उसके लिए सारे पार्ट्स कहां से आ रहे हैं, बाहर से। अब एक्सचेंज रेट को देख लीजिए, लोकल इन्फ्लेशन को देख लीजिए। वो जब सपोर्टिंग इंडस्ट्री लोकली अवेलेबल नहीं हुई और आप अभी रिलाय कर रहे थे इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर, तो हुआ क्या, योर प्रोडक्ट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड कैन नॉट कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। आपको पहले सपोर्टिंग इंडस्ट्री डेवलप करनी चाहिए थी रिसर्च के लिए, पार्ट्स बनाने के लिए, और फिर जाना चाहिए था टुवर्ड्स द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। हमने स्टार्ट ही कहां से लिया, वैल्यू एडेड से। तो नेशनल एडवांटेज उस वक्त आता है बेटा जब आप पहले सपोर्टिंग इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं और फिर सपोर्टिंग इंडस्ट्री से मूव करते हैं टुवर्ड्स द वैल्यू एडेड। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट जो चाइनीज सक्सेस के पीछे है, दैट इज सेटिंग अप ऑफ क्लस्टर्स, कि एक इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी सपोर्टिंग इंडस्ट्री है उस सारों को एक जगह ले आओ। लाइक वी यूज्ड टू हैव अ क्लस्टर ऑफ टेक्सटाइल इन फैसलाबाद। उसका प्रोड्यूसर भी वहां आ जाए, उसका रॉ मटेरियल सप्लायर भी वहां आ जाए, रिसर्च डिपार्टमेंट्स भी वहां पर आ जाए, उसकी मशीनरी वाला भी आ जाए, मेंटेनेंस वाले भी आ जाए, लेबर भी आ जाए, एक क्लस्टर बन जाए, एक सपोर्टिंग इंडस्ट्री मिल जाए। इससे आपको कॉस्ट एडवांटेज मिलती है, इनोवेशन मिलती है, और आपको एक ओवरऑल नेशनल एडवांटेज मिलता है ओवर अदर नेशंस। तो बेटा 3 चीजें नेशनल एडवांटेज के लिए अभी हमने आइडेंटिफाई कर दी। पहला, अ गुड फैक्टर कंडीशंस। Second, a strong demand condition. Third, you must have a good related supporting industry. और चौथे के अंदर 3 पॉइंट्स हैं, firm strategy, structure and rivalry. अगर आप पाकिस्तान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको कभी गौर से उसकी ब्रेकअप देखें तो आपको एक खास किस्म या एक इलाके से ही फर्म्स आती हुई इस मुल्क में इन्वेस्ट करती नजर आएंगी। इसकी वजह क्या है, कुछ मुल्कों में उनकी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का अप्रोच है लॉन्ग टर्म और कुछ में है शॉर्ट टर्म। अब जो जर्मन्स हैं, दे आर ऑलवेज प्रोन टू डेवलप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, बट इफ यू लुक एट द अमेरिकन्स, दे आर मोर टुवर्ड्स शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज। इसलिए आप देखते हैं कि ज्यादातर हमारी तरफ जो इंडस्ट्री आ रही है वो जर्मन नहीं आ रही, क्योंकि हमारे मुल्क में जो कल्चर है वो है किस चीज का, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज। तो पहली चीज ये देखनी है कि आपका स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का पैटर्न क्या है। अगर वो पैटर्न इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक नहीं है तो आप कभी भी उसमें compete नहीं कर सकोगे। तो पहली चीज है, आर यू एस्टेब्लिशिंग, डू यू हैव द राइट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस? इज इट लॉन्ग टर्म, इज इट शॉर्ट टर्म, इज इट, what type of strategy do you formulate? तीसरा है दूसरा है स्ट्रक्चर। हमारे मुल्क में ज्यादातर सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, because of very heavy dominance of the private sector. We have this centralized decision making. अब वो कंपनी जो सेंट्रलाइजेशन में बिलीव नहीं करती वो कभी भी आपके मुल्क में नहीं आएंगी, लेकिन जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन अगर हो तो वो फिर वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस तरफ फ्लो करेगी। तो दूसरा ये, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स डू यू हैव? द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स should be appropriate and according to the international demand, international markets. तीसरा है a healthy rivalry. Healthy rivalry means quality, and that rivalry will prepare you for the international market. जब तक हेल्दी राइवलरी कंपटीशन लोकल मार्केट में नहीं होगा वो कभी भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होगा। तो लेट्स सम अप दिस पोर्टर्स डायमंड मॉडल। पोर्टर्स डायमंड मॉडल कहता है कि आपको एक नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज डेवलप करना है
और वो नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज फिर ट्रिकल डाउन करेगा और आपको ले जाएगा टुवर्ड्स इंडिविजुअल एडवांटेजेस। 4 फैक्टर्स के आइडेंटिफाई किए। फर्स्ट, गुड फैक्टर कंडीशन। सेकेंड, good local demand conditions. Third, there should be well-developed supporting industry. And third is that you should have the right strategic planning process. You should have the right organizational structures. And third, a healthy rivalry जो कि quality demand करे और आपकी organizations international competition के लिए ready। तो बेटा एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस में अब जरा देखिए, ये दोनों मॉडल्स बड़े आराम से कंबाइन हो सकते हैं। तो पहले तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि यू वांट टू गो एंड इन्वेस्ट इन चाइना। फॉर एग्जांपल, अ ब्रिटिश बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वांट्स टू शिफ्ट टू चाइना, और आपसे ये कहा जाए, डू यू थिंक दिस कंपनी शुड मूव टू चाइना? अब उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है? Do China has a national competitive advantage as well as the bicycle industry is concerned? Once you said yes, now the second step is to give me a pestle analysis. China has pressure. Now give me what is the political environment. Which environment factor is giving me opportunity and which environment is giving me a threat? ये इंडिविजुअली मॉडल्स भी पूछे जा सकते हैं और इनको आपस में इंटीग्रेट करके पूछा। लेकिन याद रखिए, whenever we want to move to an international operation, the first thing is to apply the diamond model. Which nation gives me a national advantage to move? Should I move from UK to China for bicycle, or should I move to Russia? Should I move to India? कहां मुझे नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा? उसके बाद जब मैंने उसका सिलेक्शन कर ली, अब सेकेंड स्टेप है कि मैं पेस्टल एनालिसिस करूं और फिर बताऊं कौन सा फैक्टर मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है और कौन सा फैक्टर मुझे थ्रेट दे रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है, इसको याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? बोले बाबर? ठीक है, तो आई थिंक नमाज का वक्त हो रहा है। विल टेक अ ब्रेक फॉर 15 minutes फॉर नमाज and then we'll come back at 7:15 to start the class. Okay, thank you. We'll take a break.
Bismillahirrahmanirrahim. Let's start after the namaz break. Now, beta, we are discussing external environmental analysis. And remember, हमारा objective है कि हम इंडस्ट्री में जो भी prevailing threats और opportunities हैं उनको identify करें. दो मॉडल्स हमने कवर कर लिए मैक्रो एनवायरनमेंट के लिए, फोर्टिस डायमंड मॉडल एंड पेस्टर, और इसका सीक्वेंस ऑफ यूज क्या होना चाहिए वो भी हमने डिस्कस कर लिया. अब बात है कंपेटिटिव एनवायरनमेंट को स्टडी करने की, और इसके लिए जो हमारे पास मॉडल है दैट इज पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल. इस मॉडल को समझने के लिए पहली चीज जो हमारे जहन में क्लियर होनी चाहिए, what exactly do we mean by this word competitor? तो याद रखिए, कोई भी दूसरा शख्स या एंटिटी जो हमारे प्रॉफिट्स को इरोड करे, डाइल्यूट करे, is termed as competitor. जब तक हम इस चीज को जहन में नहीं बिठाएंगे तो जो आगे सोर्सेस ऑफ कंपटीशन आनी है वो साथ जहन में नहीं बैठता कि how come this is a competitor. Anyone who dilutes our profits is our competitor. Now, what are these sources? पहला जो हमें competition आता है, याद रखिए, it is from the rivals. Now, who are the rivals? Who are producing the similar products? Coca-Cola and Pepsi are rivals, and they're producing identical products. You see, after so many years, Coca-Cola, after this model was there by Michael Porter, they realized that fruit juices are not their rivals. And their rivals are only those who produce beverages. That is the contribution of this model, that even the organizations like Coca-Cola, for so many years, they were not able to categorize who actually are the rivals. Now, what is it? Why it is important? We will have a different strategy for our rivals and a very different strategy for other sources of competitors. So rivals are those who produce identical products. Who are the second sources? They are your suppliers of raw materials. एक अप्रोच है कि suppliers से collaborative एक अप्रोच रखो, लेकिन याद रखो सप्लायर आपका कंपेटिटर है. क्यों? सप्लायर अपनी टर्म्स ऑफ ट्रेड से आपके प्रॉफिट्स को डाइल्यूट कर सकता है. एंड यू विल एग्री, जो आप स्ट्रेटेजी राइवल्स के लिए बनाओगे, इट कैन नॉट बी द सेम फॉर द सप्लायर्स. यू विल हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर सप्लायर्स एंड अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर द राइवल्स. द थर्ड सोर्स are your buyers. अब बायर्स में दो हैं. एक तो बेटा वो बायर्स हैं जिन्हें आप कहते हैं एंड यूजर्स, और एक वो है जिन्हें आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. Me and you are the end users of Pepsi, but between us are the intermediaries like retailers, maybe their agents. So दो चीजें हम शामिल कर रहे हैं, बायर्स एंड यूजर्स और द इंटरमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. अगेन यू विल एग्री, जो स्ट्रेटेजी हम सप्लायर के लिए बनाते हैं वो स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती फॉर आवर कस्टमर्स. वी हैव टू अप्रोच कस्टमर्स इन अ डिफरेंट वे एज कंपेयर टू योर सप्लायर्स. हु आर द फोर्थ? दे आर द सब्स्टिट्यूट्स. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आई एम श्योर आप बाज जगह पर ऐसे लोग जिनको ये नॉलेज नहीं है उनको कहें कि जी पीआईए का कंपेटिटर है डाइवो, तो वो शायद मजाक उड़ाएंगे. बट डोंट फॉरगेट, दे आर द सब्स्टिट्यूट्स. इफ समबडी वांट्स टू ट्रेवल, ही हैज डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल. पीआईए एंड ब्लू एयर आर राइवल्स, बट पीआईए एंड डाइवो आर सब्स्टिट्यूट्स. पेप्सी and those who produce mineral water are the substitutes. So you see, वो भी हमारा competitor है जो हमारे लिए एक substitute product produce कर रहा है. ठीक है, जैसे मैंने भी आपको कहा, पेप्सी का substitute है जो
प्रोड्यूस कर रहा है मिनरल वाटर. Last but not the least are the potential new entrants. Now, potential new entrants can really hurt entering into the market. They can go for market penetration. They can go for various options, and they can dilute your profits. तो माइकल पोर्टर ने competitive environment में हमें 5 sources of competition दी. They are your rivals with identical products. They are your substitutes like Pepsi or anyone who produces fruit juices. They are your suppliers of raw materials and inputs. They are your buyers. And finally, those who can enter the market. अब इस सारे मॉडल का एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव क्या है? आपको फैक्ट्स दिए जाएं और आपको ये कहा जाए कि आप बताइए इनके मुकाबले में आपकी कंपेटिटिव पोजीशन कैसी है? How do you stand against your rivals? ये बताइए suppliers के against क्या आप competitive advantage में हैं या suppliers competitive advantage में? I'll just ask you 1 or 2 other questions. If there are numerous suppliers, who do you think will be in competitive advantage? Producer or the supplier? Producer, because we have options to buy from. If there is only one buyer or 1 or 2 buyers, जिसे हम customer concentration कहते हैं, will the customer be in bargaining position or will it be the producer? Producer, yes, absolutely. Buyer will be in bargaining position because now producer doesn't have much options to buy from. If the substitutes providing are low in cost, better in quality and performance, who do you think will be in the bargaining position, the original product or the substitutes? The substitutes will be in the bargaining position. Similarly, the new entrants in the market, it all depends upon what are the barriers to entry. अगर किसी इंडस्ट्री में barriers to entry high हैं, तो new entrants के लिए दाखिल होना उतना आसान नहीं होगा. Let's take the beverage industry. What do you think is the biggest barrier if somebody wants to enter this market and compete with Pepsi and Coca-Cola? What could be the barriers? पहले तो ये बता दीजिए, are the barriers high or are the barriers low to enter into the beverage industry? They're very high. What are those barriers? There are many. Okay, to cut it short because we're limited time. Do you think economies of scale is one of the barriers? Those companies have already achieved economies of scale. Do you think brand loyalty could be one of the barriers? Okay. Brand loyalty is one of the barriers. Do you think their network, which is already established, can be a barrier for entry for the new entrants? You see, there are so many. जहां पर ये barriers high होंगे, वहां पर दाखला उतना ही मुश्किल होगा और जो existing firms हैं, they will be in a competitive advantage against these new entrants. Airline industry is the easiest industry to enter. क्यों? You just go, there are few licenses to achieve, and you can get the aircraft leased and ready to go. It sounds very simple, but it is relatively easier to enter this market. You see, it's a very heavy threat. Yes, one threat is barrier is high, that is capital investment. So you see, हमें इस इंडस्ट्री में ये देखना है, जब आपको इस मॉडल पर आए कि competitive environment को आप स्टडी करें, evaluate करें, तो आपने ये देखना है कि पहले जिस कंपनी का जिक्र है, गौर से सुनना, वो क्या प्रोड्यूसर है, रॉ मटेरियल सप्लायर है या बायर है, और फिर उसकी निस्बत से इस मॉडल को अप्लाई करना शुरू करना. मैंने यहां गलती एक्चुअली होते हुए देखी है कि केस स्टडी सप्लायर के पर्सपेक्टिव से बनाई गई और वो सारी इवैल्यूएशन प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं. तो पहले तो डिटरमिन कीजिएगा कि इन 5 में से जो कंपनी आपकी की गई है सिनेरियो, वो किस में फॉल कर रही है, और फिर उसकी मुनासबत से डिस्कस करना शुरू करें. आर यू इन अ कंपेटिटिव एडवांटेज और आर योर प्रोड्यूसर्स, सब्स्टिट्यूट्स, दे आर इन कंपेटिटिव एडवांटेज?
Let's take one example. Automobile industry, आज से पहले इनका supplier था steel. आज क्या है? You have aluminum alloy, and you have various others raw materials that you can use to manufacture a car, different parts. So what is happening कि अब यहाँ पर अगर आप देखें तो raw material supplier की निस्बत से देखें, they have many options to offer to the producer. तो इस सारे केस स्टडी को आपने इस निस्बत से देखना है कि जो सिनेरियो आपको दिया गया है वो किस पर्सपेक्टिव से है. ठीक है, क्लियर होगी बात जी. सॉरी, कम अगेन. सॉरी, फिर से बोलिए. देखिए बेटा, राइवल्स वो हैं जो आइडेंटिकल, लाइक मैंने बताया पेप्सी एंड कोका कोला, ये राइवल्स हैं. और सब्स्टिट्यूट्स हैं, गौर से सुनना, which satisfy customers' same need through different product feature. They come from different industry. Okay, I repeat, substitutes are those who satisfy customers' same need through a different product feature. Somebody wants to travel. Now, you can travel by air, you can travel by road. तो आप कस्टमर की उसी नीड को पूरा कर रहे हो, but through a different product feature. And remember that product is being given by a different industry now. That's a beverage industry. And one is the soft drink industry. You got my point? Okay. Somebody is thirsty, the customer need is same. One says beverage, one says soft drink, one says water. Same need is being satisfied through a different product feature. That is a substitute. जबकि rivals बिल्कुल identical features होंगे product के. अब इस competitive environment में product life cycle जो है, ये भी एक important model है. कोई भी product इन 4 stages में से गुजरती है. कुछ की life cycle short है, कुछ की long cycle. We should know at what stage our product is, what sort of competition it will be facing when it is in a particular stage. Remember, at the moment we are discussing competitive environment. जब हमारी product अभी first stage पर है, तो एक different किस्म का competition face कर रही है. When it goes into the growth, it faces a different type of competition. तो competitive analysis में product life cycle का क्या role है? अब हम इसको देखने जा रहे हैं. Every product passes through these 4 stages: introduction, growth, maturity, and then finally into decline. अब इस life cycle पे जब product एक cycle से, unfortunately हमारे पास इतना time नहीं है कि हम हर stage के features को देखें, लेकिन मैं एक सच्ची सी बात करता हूं. जब product introduction stage पर है, तो normally we are facing usually price skimming. We are doing price skimming, sorry. And what we can face, market penetration. So हमें ये देखना है कि हमारी क्या competitive strategy होनी चाहिए when our product is in different stages. At the introduction stage, normally we use price skimming, and what type of competition we are likely to face is market penetration. Somebody will offer the product at a lower price than us. इसी तरह जब हम जाते हैं growth में, तो बेटा our prices start to decrease. We lower our prices. जब maturity पे जाते हैं, तो अब lower prices भी काम नहीं करती. We have to go for discounts. तो देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं? Our strategies are changing as we move from one stage of product life cycle into the other. What do we experience? We experience, अगर आप देखें इस पर slide पर, we experience change in our selling prices. We see the change in our cost structures. अभी आपके सामने इसके बड़ा interesting एक chart आएगा कि different stage पर हमारा cost जो focus है वो किस पर हो जाता है. Third, the amount investment.
Would you like to invest more money in product research or anything when the product is in decline stage? You see, the investment changes. Then spending on advertisements. Advertisement पे spending introduction stage पे different purpose के लिए, growth के वक्त different purpose के लिए है, maturity के वक्त है कि जी we are still alive, decline we may slow down. तो आइए देखें how does it work? और ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. जब इंट्रोडक्शन स्टेज से भी पहले देखिए एक और है, ऑल्दो हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज में इसको शामिल नहीं करते, दैट इज योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज. एंड दैट इज आपका फोकस किस पर है? R&D कॉस्ट एंड यू इंक्रीजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऑन इट. जब प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज पर जाती है, नाउ यू आर फोकसिंग ऑन योर ऑपरेटिंग कॉस्ट्स, एंड अब आपका जो कॉस्ट सेंटर है दैट इज मेनली ऑन मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग. यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट. ग्रोथ स्टेज और एक और देखिए इसमें फाइनल जो है इंट्रोडक्शन में, दैट यू आर incurring some cost to set up your distribution channels, your retailers, your agents, your wholesalers. जब आप ग्रोथ स्टेज पर जाते हो तो अब कॉस्ट शिफ्ट कर रही है. यू आर नाउ ट्राइंग टू स्पेंड incurring expense on increasing the capacity of your product, or you're trying to achieve economies of scale, or you're trying to increase your working capital cost. अब कॉस्ट चेंज हो रही है जैसे जैसे एक प्रोडक्ट दूसरी स्टेज पर जा रही है आपकी. अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सिनेरियोज में हो सकता है आपको यही फैक्ट्स दिए गए हों और आपसे कहा जाए कि इससे बताइए प्रोडक्ट किस स्टेज पर है. When you are at the growth stage, आप देखेंगे कंपनी हैवी वर्किंग कैपिटल बोरिंग्स कर रही होगी. क्यों? कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी है. We have to produce more. In order to produce more, they have to get more working capital funds. इसी तरह जब वो maturity stage पर जाती है, now they don't increase their capacity, they try to maintain their capacity. And इस स्टेज पर अब उनका जो एक्सपेंस हो रहा है दैट इज प्रोडक्ट एनहांसमेंट कॉस्ट टू एक्सटेंड द मैच्योरिटी. किसी तरह प्रोडक्ट के फीचर्स को थोड़ा सा ऑल्टर करें, चेंज करें और उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को थोड़ा सा एक्सटेंड करें. एंड देन एट द डिक्लाइन स्टेज, नाउ यू हैव टू टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन. शुड यू कंटिन्यू और शुड यू विथड्रॉ? इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव डिसीजन, बिकॉज रिमेंबर दैट डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट वाज वंस योर स्टार. अगर आप उसको विड्रॉ करेंगे, इट इज लाइकली टू डिस्टर्ब द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो यू हैव टू रियली सी, शुड यू विड्रॉ? व्हाट आर द विड्रॉल कॉस्ट एसोसिएटेड? ठीक. आगे चल के जब मैं इसे एक और मॉडल यहाँ पे पढ़ेंगे बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का BCG मैट्रिक्स, तो इसको दोबारा इसको टेकअप करूंगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, उससे रिलेशनशिप है. पर then you finally may decide to withdraw. Now you have asset decommissioning cost, maybe possible restructuring cost, the warranties cost. So देखिए यहाँ पर अक्सर ये चार्ट अपने पास जरूर मेंटेन रखिएगा सिनेरियोज के लिए भी, क्योंकि यही फैक्ट्स जो आपको राइट हैंड कॉलम पे दिए गए हैं, हो सकता है इसी से आपको कहा जाए कि बताइए प्रोडक्ट आपके ख्याल में किस स्टेज पर है. और नॉर्मली मैंने ये देखा है कि इस तरह की केस स्टडीज में 4 प्रोडक्ट्स दी जाती हैं और वो चारों प्रोडक्ट्स वो डिफरेंट स्टेजेस में होती हैं. एक केस स्टडी BCG मैट्रिक्स पर आई हुई है, वहां पर उसने 5 प्रोडक्ट्स दी थी, हालांकि 4 कैटेगरीज थी. तो उसमें 2 प्रोडक्ट्स एक ही स्टेज पर थी और बाकी 3 डिफरेंट स्टेजेस पर थी. बट फॉर श्योर वो आपको इतनी ऑप्शंस देगा कि वो इन चारों में फॉल कर सके. नाउ एक और स्ट्रेटेजी जो यहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लिए के मुनासिब से इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट इज द टाइम फॉर मार्केट एंट्री और एग्जिट. जो एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, याद रखिए, दे आर दोज हु आर रेडी टू टेक रिस्क एंड दे वुड लाइक टू एंटर व्हेन द प्रोडक्ट इज इन द इंट्रोडक्शन स्टेज. वो शुरू में ही उसको टेकअप करते हैं, वो उसको डिले नहीं करते. दे मे बी द फर्स्ट मूवर्स बिकॉज दे नो द फर्स्ट मूवर्स हैव द हाईएस्ट प्रॉफिट्स.
तो जो entrepreneurial organizations हैं, they would like to enter the market right at the start, at the introduction stage. लेकिन जो cautious companies हैं, they would like to delay. कब तक? When the market actually accepts the product and is in growth. Let me give you an example. Philips. 1981 में Philips bankruptcy में जा रही थी. उन्होंने अपना एक V station launch किया, competing with Sony and Microsoft, and it failed miserably. Very heavy losses for this organization. Then what happened? Mr. Bonso, who took over this company, उसने आते ही एक strategy बनाई और उसने ये कहा कि अब हम कोई innovation, we will no more be entrepreneurial company, we'll be very cautious. हम वही product launch करेंगे which a market will accept. What are they saying? We will enter the market only when the market is in growth. But we will not enter the market when it is in the introduction stage. So an entrepreneurial organization will enter right at the start, whereas a cautious company will wait. And then no company would like to enter when it is in the maturity, because they know there is very little life left in the product. So what is the timing to enter? It totally depends upon what is your risk-taking approach. Higher risk-taking, you'll be entrepreneurial. Or if you're very cautious, lesser risk, then you like to enter when the market is in the growth stage. So competitive analysis में एक 5 forces है. दूसरा हमारे पास ये product life cycle है. इसका ताल्लुक ये है कि हमारी जो competitive strategies हैं वो depend करती हैं कि हमारी product किस stage पर है product life cycle के. अब यहाँ product life cycle के साथ एक और concept आ रहा है, that is cycle of competition. Now, what is cycle of competition? Cycle of competition here, it's just like playing a game of chess. You take one move, your competitor will respond. We are always responding, remember, to a move taken by our competitor. So this cycle goes on. We take a move, they respond, and then we respond. And this cycle goes on. And that is called as a cycle of competition. Okay, so remember, one is product life cycle, और इसी के अंदर एक अलग concept आ रहा है, that is cycle of competition. अब सबसे पहले हम देखते हैं growing market में हमें किस किस्म की strategies मिलती हैं as far as cycle of competition is concerned. मुझे आपकी तवज्जो चाहिए. Growing market में हमारा competitor, they might start selling at a low price. ठीक है, अब जरा पूरा एक दफा सुन लीजिए पूरी तवज्जो से बेटा. या वो कोशिश क्या कर रहा होगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करे without increasing the selling price. So what sort of likely competitive moves we may be experiencing in the growth stage? Low prices and maybe improved quality at a same price. What is our response? Let's go for high quality product at a low price. Okay. So you see, what are we doing? We are responding to the move of the competitor. Competitor कर रहा है या तो low price, या वो क्या कर रहा है, quality को improve कर रहा है at the same price. हमारा response क्या है? Let's do both. Let's improve the quality and offer it at a low price. That's what was done by Surf Unilever. The competitor that was Wheel was doing exactly the same thing. They were selling at a low price. This did the same. They said, okay, we'll improve the quality of our detergent and offer it at low price. They responded. You getting my point? So what is cycle competition? जब हमने ये move यहाँ पर कर ली, जो इधर board में है नीचे, तो अब हमारा competitor respond करेगा. And this may result into a price war. Low price, and we may enter into a very, very cutthroat competition, that is price war. Then, in a mature market,
अब इस मैच्योर मार्केट में क्या हो रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ टू सेल एट अ लो प्राइस, वी हैव टू ऑफर डिस्काउंट्स। तो हम यहां ये देखेंगे कि अब जब डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, वी मे ऑल्सो एक्सपीरियंस सम डिक्रीज इन द क्वालिटी, because quality has a cost. If we want to offer discounts and we want to maintain some profitability, we may lower down the price. So what are we saying? We will experience now two type of moves in the market. First, discounts. Second, maybe decrease in the quality. So what may be our response? अब इसको हमने respond करना है. So we say, okay, maintain the quality and offer a discount. You see, अब बात ये है कि cycle of competition हमें क्या बता रहा है? Different stage पर you'll be seeing your competitors taking different moves, and you have to respond. Once you respond, then they will again respond in their own way. And this cycle will go on, and you have to really monitor how this cycle of competition is moving. You have to respond to the moves of your competitor. You got my point? ठीक है बेटा बाबर, आपको अब आइए इसी चैप्टर में फिर आगे जाकर आ रहा है स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस और गैप एनालिसिस। आपने इस रिवीजन क्लास में मेरे साथ 2 किए हैं जहां पर आपने ये देखा था वेयर आर द गैप्स। जैसे एक स्टडी हमने कल की और ऊपर नीचे 2 टर्म्स में उसने पूछा वेयर आर द गैप्स, वो आइडेंटिफाई कर दो। अब गैप से पहले यहां पर है स्ट्रेटेजिक ग्रुप का एक कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजिक ग्रुप एंड गैप एनालिसिस। एक्चुअली टॉपिक ये है स्ट्रेटेजिक ग्रुप किसको कहते हैं। स्ट्रेटेजिक ग्रुप में वो सारी एंटिटीज हैं बेटा हु आर ऑफरिंग सिमिलर सेट ऑफ strategies, who have similar resources and they're using some similar sort of strategies. In automobile industry, do you think Park Suzuki falls in the same group as Toyota और Honda? स्ट्रेटेजिक ग्रुप किसका होगा, होंडा और टोयोटा का या सुजुकी और होंडा का? होंडा और टोयोटा, because they probably have the similar strategy. Suzuki is in the same, but it is in a different strategic group. So within industry, remember there are different strategic groups. और वो strategic groups कौन से हैं? वो सारी industries जो के similar sort of resources use कर रही है और उनके similar strategies हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? ओके, अब इन स्ट्रेटेजिक ग्रुप का फायदा क्या है? वी हैव टू फाइंड वेयर इज द स्ट्रेटेजिक स्पेस। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वेयर टू एंटर, कहां जाना है, किस ग्रुप में जाकर आपने लॉन्च करनी है प्रोडक्ट को। देखिए इस एग्जांपल को, लेट्स सपोज किसी भी इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लें। हमने एक एक्सिस पर प्लॉट किया हुआ है प्राइस को ऑन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है क्वालिटी, और हमने देखा कि इस इंडस्ट्री में हमारे पास इस वक्त 4 ग्रुप्स हैं, जिसमें जो ग्रुप 4 है वो हाई प्राइस पर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है, और जो ग्रुप 1 है वो लो प्राइस पे लो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है, एंड इन बिटवीन देयर आर 2 अदर ग्रुप्स। और ये याद रखें इस ग्रुप्स के अंदर वो इंडस्ट्रीज है, हर ग्रुप के अंदर 4-5 नंबर ऑफ कंपनीज जो कि सिमिलर स्ट्रेटजीज फॉलो कर रही हैं। अब वेयर टू एंटर, this is where we can say now, ये जो dotted blocks हैं ये हमें बता रहे हैं this is where the gap is. We can offer, यहाँ पर पहले अगर देखें आप यहाँ पे strategic space में, let me get the pen if I can, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो है एक space हमें नजर आ रही है कि इस प्राइस पर इस क्वालिटी के प्रोडक्ट को लॉन्च करें, और दूसरी हमें स्पेस नजर आ रही है इस जगह पर। अब मुझे आप बताइए what should be your decision, which group you should enter. आपने गैप तो आइडेंटिफाई कर दिया, अब इसका ताल्लुक इसी से है, दैट इज स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस से। बताइए where should we enter, what is the ideal group we should enter. देखिए एक तो हमारे पास ऑप्शंस है ना कि हम यहां पर ग्रुप 4 में चले जाते, ग्रुप 3 में चले जाते, उनके जाकर हम किसी तरह से उनसे compete करते। लेकिन एक हमने आइडेंटिफाई कर लिया
कि यहां 3 गैप्स हैं, हाउ कैन यू टेक अ डिसीजन? बेटा इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। किस ग्रुप के लिए आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं, किस ग्रुप पे एंटर करने के लिए आपके पास कैपेबिलिटीज हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, यू वुड लाइक टू एंटर दैट ग्रुप। ये कागज पे तो डिसीजन नहीं ना लेना। मसलन आप कहते हो कि जी ये वो ग्रुप है जिसमें मैं एंटर होना चाहता हूं, वेरी हाई क्वालिटी, वेरी हाई प्राइस, कहना तो बहुत आसान है, बट डू यू हैव द कैपेबिलिटीज, डू यू हैव द कॉम्पिटेंसीज, डू यू हैव द स्ट्रेंथ्स? हो सकता है आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो आपकी वीकनेस हो। So while you decide which strategic group you should enter, you should know what are your strengths and what are your weaknesses, and also find out what are the opportunities and the threats. So wherever you find the gaps, you really have to now look for your weaknesses, your strengths, your opportunities, and your threats. What I'm trying to say, look at a probable question. He may ask you to do a SWOT, and he may ask you to do a strategic group analysis, find out where is the gap, and match it with the prevailing strengths and weaknesses. Do you think you should enter in this group or not? समझ आई बात? बोलिए बाबर जी। देखिए, एक तो बेटा बड़ी सीधी डिसीजन है ना कि अगर मैं कोई भी एनालिसिस ना करूं कि दीज आर द ग्रुप्स अवेलेबल, और मैं ये देखूं कि मेरे पास स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, आई टेक अ वेरी सिंपल डिसीजन, 4 3 2 1 जहां मर्जी एंटर होना, इफ आई हैव स्ट्रेंथ। बट व्हाट इज द वेयर वी हैव द लीस्ट कंपटीशन, एंड दैट इज वेयर वी फाइंड दिस गैप्स। इस वक्त यहां हमारे पास गैप्स हैं, देखना यह है कि इस गैप के लिए हमारे पास स्ट्रेंथ्स हैं या नहीं, कैपेबिलिटीज हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, तो देन इट इज ओके। स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस हमें यह मदद देता है, वेयर आर द गैप्स, and then compare it with your strengths and weaknesses and take a decision to enter that market. ठीक है बाबर, क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है। और इससे जरा क्वेश्चन के पैटर्न को आप करें कि अगर वो आपने उसको स्वॉट कह दिया आपको उसने करने के लिए, तो दूसरा क्वेश्चन बना सकता है कि जी स्वॉट की बेसिस पे बताओ वेयर इज द गैप, एंड असेस वेदर इट इज द राइट स्ट्रेटेजी टू एंटर इनटू दिस गैप और नॉट। क्या आपके पास इस जगह पर जहां हाई क्वालिटी हाई प्राइस है, क्या आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं, आपके पास कहीं ऐसा तो नहीं कि वीकनेस है, और आप उस इट मे बी अ फेलियर ऑफ दैट स्ट्रेटजी। ठीक है। अब आइए मार्केट सेगमेंटेशन, और ये भी हम यूज करेंगे गैप एनालिसिस के लिए। एक्चुअली मार्केट सेगमेंटेशन जाकर आगे मार्केटिंग के चैप्टर में फिर बड़ी डिटेल में आ रहा है, यहां मार्केट सेगमेंटेशन को टच करने का मकसद ही कुछ और है। देखिए, मार्केट सेगमेंट किसको कहते हैं? मार्केट सेगमेंट इज अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स विद होमोजीनियस नीड्स एंड वांट्स। जिनकी आइडेंटिकल नीड्स और वांट्स होती है उनको हम एक सेगमेंट करार देते हैं। फिर उस सेगमेंट के अंदर भी हमारी टारगेट मार्केट होती है। सो रिमेंबर, इन मार्केटिंग वी हैव अ टारगेट मार्केट, and target market is actually part of a market segment. Look at Qadir. Qadir is selling, first initially started selling for women wear. That was a segment. But usme unhone target kiya for women of the age of 25 and above. So dekhiye segment was women wear, target tha uske andar age of 25 and above. तो हम अपनी मार्केट को डिफरेंट बेसिस पर सेगमेंट करते हैं। हम उनको डेमोग्राफिक बेसिस से सेगमेंटेशन करते हैं, सोशल कल्चरल बेसिस पर करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट बेसिस पर हम उनको रीजनल बेसिस पर सेगमेंट कर सकते हैं, रूरल एरिया, अर्बन एरिया। तो किसी भी बेसिस पर हम उनकी सेगमेंटेशन करते हैं। यहां इस चैप्टर में सेगमेंटेशन करने का मकसद क्या था? लुक हियर, let's take an example of any consumer products. और हमने ये देखा कि इस वक्त इंडस्ट्री में जो दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं वो किस किस सेगमेंट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं प्रोडक्ट की डिटेल में नहीं जाना चाहता, मकसद है कि इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है सेगमेंट। तो आप ये देखिए, जो यहाँ पे बार है उससे हमें पता ये चला कि किस किस सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर यंग एंड सिंगल, यंग एंड मैरिड, मैरिड
young, married, older children, married people with children who have left home and their own. ये जो सेगमेंट है जो येलो से जो है, इस वक्त कोई भी प्रोड्यूसर इनके लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मे बी एनी प्रोडक्ट. तो यहां सेगमेंटेशन के लिए वही हम किस लिए यूज कर रहे हैं, विच सेगमेंट इज स्टिल नॉट कैटर्ड बाय एनी ऑफ द प्रोड्यूसर. हमें यहां नजर आ रहा है कि, या फिर आप देख लें कि सेल्स क्या है. आप ये देखिए, अब ये जो सेगमेंट यहां पर है, ये जो यहां पर है रिटायर्ड का, इसकी सेल्स बहुत कम है. इसका मतलब इसमें पोटेंशियल भी उतना ही कम है. लेकिन ये जो आप सबसे पहले बार देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी. लेकिन ये जो एरिया अभी आप यहां देख रहे हैं, इसमें टोटल गैप है. सो यू मे डिसाइड दैट लेट्स गो एंड ट्राई टू मीट द नीड्स ऑफ दिस सेगमेंट. तो एक चीज तरीका गैप एनालिसिस को ढूंढने, गैप ढूंढने का क्या है, गो एंड फाइंड आउट, डू द स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस. दूसरा तरीका क्या है, सेगमेंटेशन, एंड फाइंड आउट किस किस सेगमेंट के लिए प्रोडक्शन हो रही है, और फाइंड आउट वेयर इज द गैप, and then target, and then decision beta is again on the same thing. Do we have the capabilities? Do we have the understanding of this segment? Do we have the competencies to produce the product or service for this segment? Most importantly, do we understand the need of this segment? And is the segment big enough? ये ना हो कि हम segment को यहाँ take up कर लें और पता चले इसका potential ही इतना था. तो हमने कई चीजें यहां पर देखनी है, उसके बाद डिसाइड करना है कि इस गैप में जो हमारे पास अवेलेबल है, हमें एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो अगर एग्जाम में कोई गैप एनालिसिस से रिलेटेड, तो आपके पास अब दो है, एक तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस कर लें, दूसरा क्या है, सेगमेंटेशन कर लें. आपको याद है जो कल हमने वो किया था रिजॉर्ट वाला, उसमें सेगमेंटेशन ही तो थी. 10,000 ग्रुप, 3,000 ग्रुप एंड 800 रुपीज. वो जो गैप एनालिसिस था वो एक्चुअली सेगमेंट की बेसिस पे था, इनकम लेवल पर. और हमने देखा था कि कहां पर वो अभी सेगमेंट है जिसको कोई कैटर नहीं कर रहा था. Have I made my point clear? Okay. अब यहां ये मॉडल है, दैट इज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बीसीजी मैट्रिक्स. इस पर एक बहुत अच्छा सवाल आपके बीएमएस के उसमें अप्रोच में आया हुआ है, जहां उसने फाइनेंशियल डेटा दिया हुआ था, और भी मैं आपको समझाऊंगा कि उस फाइनेंशियल डेटा क्या था और उसको कैसे इस्तेमाल किया गया था. और 5 प्रोडक्ट्स थी, और आपको ये कहा गया कि बीसीजी मैट्रिक्स यूज करते हुए क्लासिफाई कर दो कि कौन सा प्रोडक्ट क्या है, मकसद क्या है, कौन सा प्रोडक्ट क्या है, और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए. बेटा बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एक मैट्रिक्स पर प्रोडक्ट्स को, हमारी प्रोडक्ट जो पोर्टफोलियो है उसको क्लासिफाई कर रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. दैट इज योर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. 2 एक्सेस पर से क्लासिफाई कर रहा है. एक है मार्केट शेयर और दूसरा है मार्केट ग्रोथ. और ट्रस्ट मी, इस पर अब जो मैं आपको बात बताने लगा, अगर ये क्लियर नहीं है तो आप उस फाइनेंशियल डेटा को कभी जज ही नहीं कर सकेंगे. आप प्योरली एक गेस वर्क कर रहे होंगे. When do we say high market share? When do we say a high market growth rate? ठीक है, इसको बहुत गौर से समझना है. What do you mean by high market growth rate, low growth rate and market share? बोर्ड पर देखिएगा. अब हमने एक आर्बिट्री सी फिगर पिक कर ली हुई है अपने लिए कि जब भी हमारा ग्रोथ रेट 10% से ऊपर होगा, we will say that is a high market growth rate. This is for the sake of case studies. आप कैलकुलेट कर रहे हैं 2 सालों में आपकी सेल्स किस तरह ग्रो कर रही है. If it works out to be 8% in this Boston group, you will classify it in low market growth rate. But if it is above 10, you will say it has a high market growth rate. तो अपने लिए स्टैंडर्ड बना लो कि आपको जो डेटा आएगा, you will be now keeping the midpoint as 10. Anything above 10 is high. Anything below 10 is low. ठीक है, growth rate clear हो गया. Similarly, you have this market share. Now you have to see who is your nearest competitor. And relative to that market, his market share, you will decide, do you have a high market share or do you have a
low market share. Nearest competitor, if his share is greater than you, then you have a low market share. But if relative to you, you have a greater share, you have a higher market. It will always be relative to the nearest competitor. ठीक है? तो growth के लिए the midpoint is 10. और share के लिए क्या है? The relative market share of your nearest competitor. Clear होगी बात बेटा? Okay. Now, तो आपके पास अब 4 हैं. That is, सबसे पहले है stars. Stars कौन से हैं? They are with, सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर जो star products. They are with high growth rate and high market share. दोनों चीजें high हैं. Market share भी high है and their growth rate is also high. That is more than 10%. Then you have these question marks. Question marks वो हैं जिनका इस वक्त मार्केट शेयर लो है लेकिन इनका ग्रोथ पोटेंशियल है. यहाँ ग्रोथ रेट पोटेंशियल के पे लिया जा रहा है. इनको क्वेश्चन मार्क क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, जैसे कोई शख्स छोटा होता है ना या स्कूल्स कॉलेज में, तो उसके माँ बाप कहते हैं पता नहीं था बनना की है. दैट्स अ क्वेश्चन मार्क. सिमिलरली जब प्रोडक्ट नहीं है, वी हैव एप्रीहेंशंस, पता नहीं ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होती है नहीं. There are a lot of question marks attached with that product. And that's why we classify it as a question mark. Remember, it has a low market share currently, but it has a growth potential. It may be a loss maker. ये बहुत तवज्जो से सुनिएगा. It may be a loss maker. Anyone? Why question marks may be a loss maker? Sorry? ठीक है, देखिए मुझे ये बताइए क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो चुकी होंगी इस स्टेज पर? What about marginal cost of production if you have not achieved economy of scale? Will it be high or will it be low? अभी आप इनिशियल स्टेज पर है, डिमांड क्रिएट हुई नहीं है, तो नेचुरली आपने इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव नहीं हुई. योर पर यूनिट कॉस्ट विल बी हाई, योर मार्जिनल कॉस्ट विल बी हाई, एंड दैट्स व्हाई that cost may not be covered by the selling price. And you may be a loss, the product may be a loss maker. मैं बार बार लफ्ज यूज़, it may be a loss maker. हो भी तो it may be earning some negligible profits. अब मैं यहाँ इसको compare करना चाहूँगा. Look at these products, dock products. They are with low market share, low growth rate, and they're also loss makers. What is the difference between dock products and question marks? Both are loss makers. Absolutely. Question mark के साथ potential for growth है. लेकिन dock products के साथ we don't find a potential for growth. They are eventually going to die out. So whatever loss is, that question mark may recover that losses. लेकिन जो dock products है, they may not. Now, then we have these cash cows. This is very, very interesting. Why do we call them as cash cows? अब मेरी बात बहुत वजह से सुननी है, because that is a catch here. Cash cows वो हैं जिनका इस वक्त growth rate बहुत high है, but इनका growth rate low हो गया या stagnant हो गया, लेकिन इनका market share फिल वक्त high है. देखिए ये कभी स्टार थे तो इनका हाई मार्केट शेयर तो था ही. अब क्या हुआ है कि वक्त के साथ इनका जो ग्रोथ रेट है वो स्टैग्नेंट हो गया है या डिक्लाइन होना शुरू हुआ है. ज्यादातर हम कैश काउ में कहते हैं इट इज स्टैग्नेंट, क्योंकि जब गिरना शुरू होता है तो वो तो डिक्लाइन है. तो कैश काउज यूजुअली हैव अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट और अ वेरी स्लाइट डिप इन द ग्रोथ रेट. ठीक है, अब सबसे अहम चीज मैं करने लगा हूं, बात गौर से सुनिएगा. Question marks. बताइए, do you need to invest heavily in the question marks? Yes or no? You need to invest. क्यों? Marketing में, advertising में, sales promotion में, initially distribution channel में invest करने के लिए you need to invest. लेकिन अभी revenues उस level पर नहीं आ रहे हैं. Stars. Do you need to invest in stars?
Stars are you people, young people. Ask your parents. Then you ask for a lot of investment, your fee and others. So these stars, they demand कि जी हमें growth के लिए पैसा चाहिए, हमें market share और capture करने के लिए पैसा चाहिए. They are the one who demanding the probably one of the maximum cash flows. Working capital funds चाहिए growth को पूरा करने के लिए. So बताना क्या चाह रहा हूं? Question marks, investments, yes. Revenues अभी नहीं आए. Stars now, yes, they require investment, but they are now generating funds. What happened at maturity? Now these are your parents. What happens? They have funds. They say, पहले हम जरा family पे खर्च कर लेते हैं. They don't spend on themselves. So ये question marks, sorry, cash cows के cash cows क्यों कहते हैं? Milk your cows. Get the cash out और इसको use करो किस चीज के लिए? इससे जो surplus cash आएगा, इसको इस product में दोबारा investment नहीं करते, बहुत कम. इससे आप cash निकालते हो to invest in the question marks. इससे आप cash निकालते हो to support the stars. And listen carefully, इससे आप cash निकालते हो to extend the life of dogs. उनको मार्केट में जितनी देर हो सकता है उसको रखो. इसीलिए बेटा कैश काउस को फाइनेंसर्स कहते हैं. कैश काउस को फाइनेंसर्स कहते हैं. They provide funds for what? Launching of question marks. They provide cash for supporting the growth of stars. And they provide you surplus cash to extend the life of dogs. ठीक है? अब मेरा आप लोगों से सवाल है, आपके पोर्टफोलियो में एक ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क है. Would you like to launch another question mark at the same time? With no other cash cow there at the moment. You have one star and you have one question mark. And you want to launch a new product. Is it a good time to launch a new product? There is one star and there is one question mark. And somebody says, okay, let's launch a third product. Would you like to do that? Very heavy burden on your cash flow. वो question mark पहले ही पैसा मांग रहा है, star भी पैसा मांग रहा है. अभी तो surplus cash आपके पास आने भी नहीं शुरू हुए, तो अभी आप एक और ले आएंगे, एक cash flow पे burden पड़ जाएगा. What is the ideal time? You must have one product in your portfolio which is cash cow. क्योंकि वो जब वो cash cow आपके पास available है, वो आपसे पैसा नहीं मांग रहा. अब उससे surplus cash को निकाल के invest करोगे in your dogs, in your question marks, and in your start. अगर आपसे सवाल आए कि ये portfolio को देखो, and what is the right time to launch a new product? वो है जब आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एक प्रोडक्ट कैश का हुआ है, वो आपको सरप्लस कैश देगा, उसको यूज करो टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट. अगर एक ऑलरेडी स्टार है, एक ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क है, अब तीसरा उसके ऊपर लाकर एक और क्वेश्चन मार्क डाल दो, तो कैश फ्लो के ओवरबर्डन हो जाएगी. या ये समझ लीजिए कि एक आपके पास, अब ये जरा देखिए, एक आपके पास डॉग प्रोडक्ट है और एक मैच्योर प्रोडक्ट है. Would you like to launch a new product? Very dangerous, because that dog product may take away the goodwill of the new product. So you have to be very, very careful. What is the position of that dog? You may first like to take it off and then launch a question mark. So you have to very strategically, very, very vigilant. When is the right time to launch a new product? तो काइंडली पास पेपर्स में भी देखिएगा, उसमें भी एक मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको, मुझे याद रहा तो मैं भिजवा दूंगा, दैट केस स्टडी फ्रॉम योर पास पेपर्स दैट सेज कि ये 5 प्रोडक्ट है, उन्होंने इनकम स्टेटमेंट दी हुई थी कंपनी की, और सेल्स प्रॉफिट्स और सारी फिगर्स दी हुई थी, मार्केट शेयर भी दिया हुआ था, और उससे उन्होंने कहा जी कि आप सारी कैलकुलेशंस करके एवेलुएट करके बताओ कि इसमें से क्वेश्चन मार्क कौन सा है, स्टार कौन सा है, डॉग प्रोडक्ट्स कौन सी है, और मैच्योर प्रोडक्ट्स कौन सी है. Is PCG matrix clear? And you know, इसमें आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे फॉर श्योर, और उससे आपने असेस करो. सिर्फ ख्याल क्या रखना है, ग्रोथ रेट हाई कब लेना है? When it is greater than 10%.
मार्केट शेयर हाई कब लेना है, रिलेटिव देखें, कोई ना कोई फिगर दी होगी कि उसका मार्केट लीडर जो है उसका शेयर कितना है, उससे असेस करें कि आपका मार्केट शेयर हाई है या लो है। नाउ द कैपेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द बिजनेस, अगेन ये चैप्टर भी इस बार बहुत कई लिहाज मुनासिबत से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पिछले अटेम्प्ट्स में अभी तक टारगेट नहीं हुआ। बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी? तो दोनों बातें एक ही हो गई। कुछ हद तक आप सही कह रहे हैं। आपने देखा कभी F1 फॉर्मूला की गाड़ी की रेस होती है, 10-12 ड्राइवर्स हैं, उन सारों की कैपेबिलिटीज सबकी एक जैसी होती है तकरीबन, जीतता कोई एक है। सो कैपेबिलिटी इज एक्चुअली योर रिसोर्स and competency is the skill in the use of that resource. Having that car was a capability. Having that skill to drive that car effectively is a competency. तो ये जो चैप्टर है ये दो चीजों पे बार बार बात करेगा, कैपेबिलिटी पे और कॉम्पिटेंसी. Possessing something is your capability, and having a skill to use that resource is your competency. Now, यहां ये एक रिसोर्स बेस्ड व्यू है कि हम स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी कहते किसको हैं। अब याद रखिए, सबसे पहले बात शुरू ये होती है ऑफ पोजेसिंग अ रिसोर्स। इस रिसोर्स के इस्तेमाल में फिर हम स्किल्स हासिल करते हैं, एंड दैट देन बिकम्स अ कोर कॉम्पिटेंसी। ठीक है, ये सारे स्टेप्स हैं। ये एक दिन स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी एकदम नहीं हासिल हो जाती। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी किसको कहते हैं? एक ऐसी कैपेबिलिटी which is likely to give me a competitive advantage. So remember, there's a difference between capability and strategic capability. ऐसी कैपेबिलिटी जो मुझे competitive advantage दे, वो strategic capability है। तो पहले तो सिर्फ एक कैपेबिलिटी होती है, that we acquire something, then we acquire skills. Technology is simple capability. फिर हम skills हासिल करते हैं in the use of that technology, and that it then becomes your core competency. अब capabilities भी आ गई, competency भी आ गई. How to deliver it? And for that we have a mechanism, आपने पढ़ा होगा, that is your value chain. Value chain वो mechanism है जिसका अभी थोड़ी देर में time permits हम पहुंच जाएंगे। वो mechanism है primary activities और secondary activities का, जिसके थ्रू अब हम इनको deliver करते हैं to add value for the customer. कैपेबिलिटीज भी आ गई, कॉम्पिटेंसी भी आ गई। अब वो वैल्यू चेन है, सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, जिससे अब हम इस वैल्यू को डिलीवर करते हैं टू द कस्टमर, एंड देयरबाय वी अचीव अ कंपैटिटिव एडवांटेज। एंड व्हेन इट बिकम्स अ कंपैटिटिव एडवांटेज, ओनली देन रिमेंबर दैट रिसोर्स बिकम्स योर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। एक रिसोर्स स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी कब बनेगा? सबसे पहले उसमें कोर कॉम्पिटेंसी हासिल करो, फिर उसको डिलीवर करो थ्रू वैल्यू चेन टू ऐड वैल्यू फॉर द कस्टमर, फिर वो वैल्यू इस तरह डिलीवर करो कि इट गिव्स यू अ कंपैटिटिव एडवांटेज, एंड ओनली देन यू कैन क्लेम कि ये कैपेबिलिटी नहीं रही, अब ये आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। समझ आई ये बात? ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर में वैल्यू चेन आती है आगे। और वैल्यू चेन क्या है? वो मैकेनिज्म है जिससे हम वो कॉम्पिटेंसीज और कैपेबिलिटीज के एक कॉम्बिनेशन से
उस वैल्यू को डिलीवर करते हैं, टू ऐड वैल्यू, to get a competitive advantage, and thereby we are now strategically saying that now this is my strategic capability. ठीक है, so ये याद रखें, every capability is not strategic capability until it gives me a competitive advantage. अब again जब ये BMS मॉड्यूल में था, स्कीम में था, तो बेटा ये टॉपिक बहुत फ्रीक्वेंटली, और somehow जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ICW के जो पेपर्स हैं स्ट्रेटजी के, उसको व्यू करें, उसमें भी ये एग्जामिनर का बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और एज एन अकाउंटेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आई शुड नो व्हाट आर द CSF, व्हाट आर द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। देखिए, आपने स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी डिटरमिन कर ली, अब आपने डिटरमिन करना है व्हाट इज द क्रिटिकल फैक्टर फॉर माय सक्सेस। याद है कल हमने एक क्वेश्चन किया था on that restaurant or that cafe which was supplying coffee, और उसमें हमने कहा था कि बताओ what are the critical success factor, वो चीज जो essential है for success, और यहां हम success किसको कह रहे हैं, a competitive advantage। आप लोगों में ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप सिनेरियो पढ़ें और लॉजिकली आइडेंटिफाई करें कि इस कंपनी के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, ये मैं फिर आपसे वाज़ेह कर दूं, आप में ये एक प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए कि सिनेरियो पढ़ के आप आइडेंटिफाई कर सके कि यहां पर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कौन सा है। अब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर डिफरेंट स्टेजेस पर आइडेंटिफाई किए जाते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में। ठीक है, अब इसी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखिए इसके साथ वो बहुत आसानी से मर्ज कर सकता है बेंचमार्किंग। ठीक है, किस तरह, मैंने पहले ही आपके साथ ज़हन में डाल दिया ताकि इसको फिर बाद में आप जोड़ सकें विद द टॉपिक ऑफ बेंचमार्किंग। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस में आपको ये देखना है व्हाई द अदर प्रोडक्ट्स वर सक्सेसफुल। जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं ना, डिटरमिन करें वो सक्सेसफुल क्यों है। आपको उसकी जो वजह नजर आएगी, हो सकता है वही हो उसका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। If you say Coca-Cola and Pepsi are successful, okay, good enough. Why? Find out. Is it the brand loyalty? Is it the price? Is it the network? Is it the supply chain? What exactly is the reason of success? तो strategic planning stage पर आप दूसरी प्रोडक्ट के सक्सेस रीजंस को देख के डिटरमिन कर सकते हो what should be your critical success factor. फिर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस में यहां क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, यहां क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है आपकी स्ट्रेंथ्स। जो आप स्ट्रेटेजिक चॉइसेस ले रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज दे आर गोइंग टू डिटरमिन व्हाट आर योर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। इट मे बी योर फाइनेंशियल रिसोर्सेस, इट मे बी योर ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स, it may be your knowledge in technology, it may be your brand value. What exactly is your strength? तो strategic choices पे जब आप CSF determine कर रहे हैं तो उस वक्त important है what are your strengths. तो देख, मैं आपको ये कह रहा हूं कि CSF कभी constant नहीं रहते। हर stage strategic process पे you have to change your CSF. जब आप प्लानिंग स्टेज पर हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस, तो उस वक्त है कि इंडस्ट्री में जो दूसरी प्रोडक्ट्स है वो सक्सेसफुल क्यों है, उस वक्त आपके CSF वो होंगे। जब आप एक स्टेप आगे गए और स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, अब आपने छोड़ दिया पिछला, अब आपने ये देखा व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट आई कैन डू बेटर देन अदर्स, नाउ दे आर योर CSF। एंड व्हेन यू कम टू स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, अब जो आपने सेट किए हैं उसके लिए आपने उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है, एंड the terms in which you measure your CSFs are called as your KPIs, key performance indicators. अब जो भी आपने CSF डिटरमिन किए हैं, अब आपको एक पूरा मैकेनिज्म उसके लिए परफॉर्मेंस टारगेट सेट करने हैं और पूरा एक सिस्टम डिटरमिन करना है टू मेजर द परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ दैट CSF। फिर सुने, प्लानिंग स्टेज पर आपने ये देखा व्हाई द अदर प्रोडक्ट्स आर सक्सेसफुल।
चॉइसेस स्टेज पे देखा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, मोस्ट लाइकली योर सीएसएफ गोइंग टू बी स्टेन। फिर आपने उन सीएसएफ के लिए डिटरमिन किए आपने परफॉर्मेंस टारगेट्स, वो परफॉर्मेंस टारगेट्स कहलाते हैं केपीआईज। अब आपके पास रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए जो आपको रिपोर्ट करे परफॉर्मेंस ऑन दोज केपीआईज, ताकि आप ये देख सकें क्या आपने उन सीएसएफ को अचीव किया या नहीं अचीव किया। ठीक है, तो सीएसएफ को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ केपीआई। अब दिस इज अ वेरी वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन कि आपको कहे कि आइडेंटिफाई करो सीएसएफ और आइडेंटिफाई करो व्हाट आर द केपीआईज, उस केपीआईज को भी आइडेंटिफाई कर दो। लाइक फॉर Domino's Pizza, their CSF was a quick delivery within 30 minutes of the order. ठीक है, और KPI क्या था? What are the number of complaints? What are the number of deliveries which are rejected by the customers? KPIs को हमने उस क्वांटिटी में मेजर किया, कितने कस्टमर्स ने रिस्पॉन्ड किया कि जी हमें प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिली या प्रोडक्ट क्वालिटी की नहीं थी। तो हर सीएसएफ के लिए याद रखो आपने डिटरमिन करना है केपीआई, और एक मेजरिंग सिस्टम होना चाहिए जो आपको मेजर करके दे कि वो केपीआई आपने अचीव किया है या नहीं अचीव किया। तो देखो अब क्या हुआ, हमने स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी डिटरमिन की। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी डिटरमिन करने के बाद अब आपने कहा व्हाट आर द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, व्हाट वी नीड टू डू द बेस्ट। Once we say what, अब यहां जरा देखिए, कभी आपने देखी है वो F1 फॉर्मूला की गाड़ी की रेस, कभी देखी है? कभी नहीं देखी। उसमें आपने देखा देयर इज अ पिट स्टॉप, गाड़ी आके रुकती है और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसके चारों टायर चेंज होते हैं, गाड़ी रिफ्यूल होती है, एंड विद इन 11 to 12 seconds the car is back on the track. That is a CSF. Your CSF is how quickly your ground crew makes the car ready to go back on the track. KPI क्या है? What is the time taken? 10 seconds, 11 seconds, 12 seconds. You measure that and you say if that is, you have achieved your CSF. If you have achieved your CSF, there will be success. ठीक है, एक एग्जांपल यहां देखिए। एमिरेट्स एयरलाइन अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि जी हाउ क्विकली द ग्राउंड क्रू makes my aircraft ready to fly again. They said this is my CSF. जहाज लैंड करे, ग्राउंड क्रूज को जो भी उसने प्रिपरेशन करनी है प्रिपरेशन करे and get the plane ready to go in air. क्यों? As long as the aircraft is on ground, it is not giving me revenue. It is giving me revenue only when it is in air. So it has to be in air as quickly as possible. अब उन्होंने KPIs determine शुरू किए। कहाँ से ढूंढे? And you know, very surprisingly, where they got the KPIs from? F1 फॉर्मूला कार। कैसे ग्राउंड क्रू वहां पर उस गाड़ी को रिसीव करता है एंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट गेट्स द कार बैक। उन्होंने कहा वहीं से सारा कुछ सीखो, उसको बेंचमार्क बनाओ और वहीं से देखो सीएसएफ, उससे सीखो और केपीआईज को सीखो एंड लॉन्च इट इन द एयरलाइन इंडस्ट्री एंड सी दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। अब जॉनसन एंड शोल्स का एक मॉडल है जो हमें कहता है व्हाट इज द अप्रोच ऑफ 6-step approach of setting and using of the CSF. Okay. What is the first approach? Identify karo which are the factors which are critical to profitability. जैसे point number 2 में हमें कुछ examples दी गई। Is the critical success factor low selling price? Is it quality? Is it prompt delivery? Identify करो कौन सा फैक्टर है जो क्रिटिकल है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। जब आप ये सोच रहे हो तो कस्टमर नीड को जहन में रखो और वो जो 4 मार्केटिंग पीस थे उसको जहन में रखो। तो जॉनसन शोल्स कहता है पहला स्टेप क्या, आइडेंटिफाई करो प्रॉफिटेबिलिटी के मुनासबत से आपके सक्सेस फैक्टर्स कौन से हैं। जब एक दफा आपने इनको आइडेंटिफाई,
अब आपके लिए बहुत चीज आसान हो गई, सीएसएफ किसकी निस्बत से देखना, प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरी चीज उसने अब ये कही कि अब ये बताएं व्हाट इज नेसेसरी टू अचीव परफॉर्मेंस इन दैट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। क्या चीज जरूरी है अब इसमें जाने के, लाइक इफ वी से लो सेलिंग प्राइस, तो यू विल एग्री लो सेलिंग प्राइस के लिए व्हाट इज क्रिटिकल, you got to have very good cost control. Without effective cost control, you will never be able to sell the product low price and generate some profit margins. For example, if you say prompt delivery, कि ये critical success factor, as in the case of Domino, so you've got to have a very effective production system. कहीं bottlenecks नहीं होने चाहिए। तो इसमें आप, फॉर एग्जाम्पल यू से JIT, तो यू गॉट टू हैव 0 डिफेक्ट्स। सो आपको पहले स्टेप में कहा कि बताओ विच इज द फैक्टर क्रिटिकल फॉर प्रॉफिट्स। दूसरे में आपसे ये कहा गया व्हाट यू नीड टू डू टू बी सक्सेसफुल इन दैट एरिया। नाउ थर्ड, डेवलप अ वेरी गुड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी, अ स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी in that thing which need to be done. जो स्टेप नंबर 2 में आइडेंटिफाई किया था ना, दिस नीड टू बी डन, उसमें स्किल हासिल करो, उसमें कॉम्पिटेंसी हासिल करो। वंस यू हैव अचीव द कॉम्पिटेंसी, अब डिफाइन करो उसके लिए KPIs। देखो कितना आसान है। फर्स्ट आइडेंटिफाई, सेकेंड व्हाट यू नीड टू डू, थर्ड अचीव अ कॉम्पिटेंसी, फोर्थ आइडेंटिफाई द KPIs। इसके बाद आपने ऐसी कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटी अचीव करनी है विच इज डिफिकल्ट टू इमिटेट। यू गॉट टू हैव अ सस्टेनेबल एडवांटेज। उसके लिए आपकी कॉम्पिटेंसी ऐसी होनी चाहिए जो यूनिक हो, जो ऐसी हो जो कि इस आसानी से इमिटेट ना हो सके। ये नहीं कि अभी आपने किया अगले दिन किसी को कोई कॉपी कर ले तो पता चले जी सुबह तो कि जी खत्म हो गई हमारी कॉम्पिटेंसी। तो स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई, स्टेप नंबर 2 व्हाट वी नीड टू डू बेटर, achieve competency, then define KPIs, and then achieve the competency to a level which is difficult to imitate. And then the sixth is that you should have a very good monitoring, measuring system of measuring the performance in KPIs. Constantly आपको feedback देता रहे with respect to KPIs, how well you are achieving those KPIs. अब बेटा आपके लिए चीज बहुत आसान हो जाएगी। सिनेरियोस के लिए हमेशा जॉनसन शोल्स को मॉडल यूज करें, आप इसको जर्नल ना लें टॉपिक को, हमेशा इसका ताल्लुक दिया गया है या नहीं, हमेशा इसी को यूज करें। आइडेंटिफाई विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट, आइडेंटिफाई व्हाट यू नीड टू डू गुड, देन डेवलप अ कॉम्पिटेंसी, देन you got to have a competency which is very difficult to imitate, set the KPIs, and then you must have the measuring system to measure the performance in those KPIs. Is the JSW clear to everyone? ठीक है। और यही मैं आपसे कहूंगा जब एग्जाम के लिए जाओ और ये 30 नंबर का एरिया है, ये जो मटेरियल आपको अवेलेबल हो गया हुआ है फेसबुक पे, स्लाइड्स वगैरह लिंक पे अवेलेबल है, go through it, revise that, have you done everything in this area or not. इसके अलावा जो है वो इतना टेस्टेबल पोर्शन नहीं है। मैंने इसमें वो सारे टेस्टेबल पोर्शन जो हैं जिसमें पेपर क्वेश्चन बन सकते हैं इसको शामिल कर दिया। पहले इसको इंश्योर कर लें। अब आइए बेंचमार्किंग, जैसे मैंने कहा था। ओके, स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस में आप क्या चीज डिटरमिन कर रहे होते हो? स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कर रहे होते हो ना? क्या बेंचमार्किंग का कोई इस्तेमाल है यहाँ पर? मैं आपके साथ क्या इस डिस्कस कर रहा हूं, व्हाट इज द रोल ऑफ बेंचमार्किंग एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस। इस सवाल को गौर से सुन लो क्योंकि एग्जाम में टेस्टेबल पोर्शन है। व्हाट इज द रोल ऑफ बेंचमार्किंग इन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस। ठीक है, अब बताइए स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस में यू हैव टू डिटरमिन स्ट्रेंथ, व्हाट यू हैव टू डिटरमिन वीकनेसेस। How will you use benchmarking? क्या बताया था बेटा, स्ट्रेंथ क्या होती है? Which is better than others. आगे ना बेंचमार्किंग, which is better, तो हमें पता होना चाहिए दूसरे के पास क्या है।
और वो हमारा बेंचमार्क होगा। जैसे ही हमने इस बेंचमार्क को क्रॉस किया, इट इज माय स्ट्रेंथ। जब वो बेंचमार्क से नीचे है, इट इज माय वीकनेस। तो बेंचमार्किंग स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस में यूज होती है। ठीक है, अब आइए स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। जेनेरिक स्ट्रेटेजी में जो प्रोड्यूस जेनेरिक, कौन सी दो हमारे पास स्ट्रेटेजीज थी? एक कॉस्ट लीडरशिप और एक क्या थी? डिफरेंशिएशन। यहां बेंचमार्किंग का कोई इस्तेमाल है? Let's take one. Cost leadership. What is the use of benchmarking in cost leadership? Yes. Your cost has to be lower than your competitor. Your competitor cost is your benchmark. आप cost leadership claim कर रहे हैं, कैसे claim कर रहे हैं? You got to have a benchmark. जब तक आप उससे नीचे नहीं हैं, you can't claim that you are a cost leader. What is differentiation? Differentiation में कैसे use करेंगे benchmarking? Absolutely right. What are the features offered by your competitor? Whenever you cross that feature benchmark, you are differentiated. Below that, your product is still not very well differentiated. समझ आई बात? बोल ठीक है। तो देखिए, पोजीशन स्टडी, पोजीशन एनालिसिस में बेंचमार्क्स यूज हो रहे हैं और इसमें भी यूज हो रहे हैं। नाउ स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, where are the benchmarks? Strategy implementation. You have to tell me, in implementation, is your strategy successful or failure? Where are the benchmarks? Successful कब होगा? जो benchmark को cross करेगा। Failure कब होगी strategy? जब वो benchmark से नीचे है। तो बड़े आराम से एक सवाल बनता है, what is the role of benchmarking in strategy formulation process? Is it used at one step? No, it is used at all three steps of strategy formulation. Strategic position analysis, strategic choices, and strategy implementation. जी, बाबर, clear बेटा? अब there are different types of benchmarking. एक है हमारे पास internal benchmarking. Naturally, हम अपने ही जो best performing unit है, जो भी इंटरनल बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट है, उसको बेंचमार्क बना लेते हैं। लेकिन इसमें फ्लॉ क्या है? जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, इनके वर्किंग कल्चर्स, वर्किंग कंडीशंस बहुत डिफरेंट है। अगर इसको हम बेंचमार्क बनाते हैं तो दे मे नॉट बी अ वेरी रियलिस्टिक बेंचमार्क, बट ये प्रोबेबली सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। क्यों? हमारे पास अपनी परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स हैं। दूसरा क्या? ऑपरेशनल बेंचमार्किंग। ऑपरेशनल बेंचमार्किंग क्या है? जिस ऑपरेशन के लिए बेंचमार्क बनाना है, उसका सिमिलर ऑपरेशन लें किसी और इंडस्ट्री में। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, एयरलाइन इंडस्ट्री एंड दैट कार रेस। सिमिलर ऑपरेशन इन अनदर इंडस्ट्री, वहां जाके आपने उसको बेंचमार्क बनाया। नाउ दैट इज एन ऑपरेशनल बेंचमार्क। Then the third is competitive benchmarking. Naturally, now you're comparing your performance with your successful competitors. इसमें क्या फ्लॉ है? अच्छा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे बताइए खुद, ये फ्लॉ शायद आपको समझ आ जाए। हमारे मुल्क में जो पॉलिएस्टर यान है, पॉलिएस्टर यान एक बना रही है लोकल कंपनी रूपाली पॉलिएस्टर, और एक है आईसीआई, जो अब नेचुरली सेल ऑफ हो चुकी हुई है, लेकिन मैं आईसीआई का नाम ही लेता हूं ताकि बेहतर तौर पे समझ आ सके। तो बताइए, अगर रूपाली पॉलिएस्टर आईसीआई को बेंचमार्क बनाए, व्हाट इज द फ्लॉ? Are they of same resources? One is a multinational, one is a local company. हालांकि वो कंपेटिटर है, मार्केट लीडर है। अब मैं उसको कंपेटिटर का बेंचमार्क बना रहा हूं, and that is huge. How can that be a practical benchmark? क्योंकि जो कंपेटिटर है वो मल्टीनेशनल है और हम अभी लोकल कंपनी में हैं, तो ये इसमें भी फ्लॉ है। Then another type of benchmarking could be your customer benchmarking. What does the customer want? Customer validation किसको कहता है? हम कहते हैं जी ड्यूरेबिलिटी। ओके, कस्टमर ड्यूरेबिलिटी किसको कहता है? कस्टमर कहता है क्वालिटी। हम कहते हैं जी बेंचमार्क क्वालिटी में। कस्टमर क्वालिटी कहता है किसको है? रिलायबिलिटी। तो कस्टमर का ओपिनियन क्या है? वन बेंचमार्क इज व्हाट द कस्टमर थिंक्स।
Similarly for the price, do a market research and find out what the customer expectation about the price and let that be a benchmark for setting the prices. तो देखिए आपके पास डिफरेंट अप्रोचेस है, इंटरनल बेंचमार्क है, आपके पास ऑपरेशनल बेंचमार्क्स हैं, आपके पास कंपैटिटिव बेंचमार्क्स हैं, आपके पास कस्टमर बेंचमार्किंग है. लेकिन ये याद रखिए, बेंचमार्किंग इज समथिंग व्हिच इज नेसेसरी फॉर CSFs, which is necessary for strategy formulation process. Have I made my point clear? Okay. या बाद में इसको देख सकते हैं, मैं इसके उसमें नहीं जाना चाहता. Then you have this value chain. क्या अहमियत थी वैल्यू चेन की इस चैप्टर के अंदर? अगर आपने कैपेबिलिटी को स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी में कन्वर्ट करना है, तो that combination of competency and capabilities have to deliver value to the customer. And for that you have this value chain. कौन सी दो set of activities होती हैं value chain में? One are the primary activities and one are the secondary activities. कोई बताएगा what are the primary activities? Inbound logistics, then you have operations, then you have outbound logistics, marketing and sales, and services. Okay. And what are the secondary activities? Okay, ठीक है. अब बहुत अहम चीज है आपकी, एक है सपोर्टिंग एक्टिविटीज, एक है प्राइमरी एक्टिविटीज. Which secondary activity does not support the primary activity? अब हमारे बुक में असल में जो डायग्राम बना हुआ है उसमें थोड़ा सा फ्लॉ है, और अगर आप पोर्टर की जो वैल्यू चेन का असल मॉडल है उसमें देखें तो बिल्कुल सही है. और ये मेरा सवाल जो है ये बहुत अहमियत रखता है. देखिए, प्रोक्योरमेंट आप इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के लिए भी कर रहे हैं, ऑपरेशंस के लिए भी कर रहे हैं, मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, तो वो सबको सपोर्ट कर रहा है. HR, अब HR ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस जो है वो आप हर एक के लिए कर रहे हैं, इनबाउंड के लिए भी HR कर रहे हैं, ऑपरेशंस के लिए भी कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं. टेक्निकल डेवलपमेंट ठीक है, डेवलपमेंट है, टेक्निकल डेवलपमेंट, वो आप सबके लिए कर रहे हैं. आखिरी है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर. A firm infrastructure does not support your primary activity. इसलिए जो ऊपर से यूं वर्टिकल लाइंस उठती है ना, वो कहीं जाकर फार्म स्ट्रक्चर को काटती नहीं है, वो उसके पास जाके रुक जाते हैं. और वो लाइंस वर्टिकल जो ड्रॉ हो रही हैं वो ये शो कर रही हैं कि जो फर्म स्ट्रक्चर है वो कहीं पर प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट नहीं कर रहा. फर्म स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कंपनी का प्लानिंग प्रोसेस क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इन्वेंटरी मैनेजमेंट का, व्हाटएवर आर डिफरेंट planning structures of the company, वो कहीं पर भी primary activity को support नहीं कर रही होती. So you add value through what? Primary activities, and they are supported by the secondary. Which secondary activity do not support the primary is the top one, that is the firm structure. वो क्या है? वो सारी organization को support कर रही है. That is firm organization structure, its planning process, its management processes. वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल सपोर्ट कर रही होती है. ठीक है. अब यहां सवाल किस तरीके से आ सकता है? दो तरीके हैं. पहला तरीका, जिसके मुझे ज्यादा प्रोबेबिलिटी लेकिन बताना जरूरी है, कि आपको कहा जाए कि आइडेंटिफाई कर दो which one is inbound, which one is operational activity, which one is your outbound activity. मुझे बताए इनबाउंड आउटबाउंड में क्या फर्क होता है बेटा? इनबाउंड रिलेट्स टू व्हाट? Okay, is the ordering part of procurement or ordering part of inbound? Ordering is part of procurement. That's the cutoff point. Once the materials have been ordered, that's procurement. Once it is received, quality check, storage, insurance, material handling systems, the material issuance systems, inventory management systems, they all come in inbound. Ordering is part of procurement. It is not part of inbound logistics. Procurement does that ordering. Selection done by order, that procurement. उसके बाद जब मटेरियल आ जाता है, इसके बाद इनबाउंड शुरू होते हैं. अब आउटबाउंड ऑपरेशन कहां पर खत्म हो जाते हैं और आउटबाउंड शुरू हो जाती है?
Once the good is produced and it is sent for storage, distribution and sales, that is part of your outbound logistics. So how the goods are stored and how they are handed over to the customer, I'm sorry, that's part of your outbound logistics. So remember, your inbound logistics deal with your inputs, and your outbound logistics deal with your finished goods. How the goods are stored, how they are distributed, how they are handed over to the customer, that is your outbound logistics. Let me give you the simplest of the example. You go to some departmental stores and you check out. वो billing system सारा जो है, that's outbound. They say, pack your goods yourself, carry your goods yourself, take it to your car yourself. All this is your outbound. कई जगह पर क्या है? Check out होते हैं, आप payment करते हैं. Somebody packs the goods for you. Somebody carries the goods for you. And now that is again an outbound logistic. You buy an air conditioner and he says the goods will be delivered at free of cost. You say it will be installed free of cost. Now that's all outbound. Outbound deals with how the goods are delivered to the customer. Uski storage finished goods ki outbound mein. What is marketing and sales? Very simple. Those are those marketing piece. Finally, services. The गौर से सुनना, services का cut off point क्या है? कहाँ outbound खत्म होता है और कहाँ services शुरू होती हैं? Services is once the customer has started the use of the product. Air conditioner की installation outbound है या services में आएगी? Outbound, क्योंकि customer ने भी उसकी use शुरू नहीं की. लेकिन उसी एयर कंडीशनर की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, उसकी गारंटीज, उसकी वारंटीज, ये किस में आएंगी? सर्विसेज में. तो कट ऑफ पॉइंट क्या है? वेयर द कस्टमर स्टार्ट्स द यूज ऑफ द प्रोडक्ट. यू गॉट द आइडिया? तो एक तरीका क्या आपको कहा जाए कि आइडेंटिफाई कर दो. दूसरा तरीका यह है कि आपको यह कहा जाए कि इसमें से अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूं, आइडेंटिफाई करो कौन सी वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है, कौन सी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है और कौन सी वैल्यू इनेबलिंग एक्टिविटी है. ठीक है, अब बहुत तवज्जो से सुनना है, बहुत सिंपल है. 5 मिनट में यू विल गेट द कॉन्सेप्ट. बेटा, सारे वैल्यू चेन एनालिसिस का एक बहुत बड़ा मकसद है आइडेंटिफाई करो विच वन इज द वैल्यू एडिंग एक्टिविटी. 3 खासियतें हैं वैल्यू एडिंग एक्टिविटी की. नंबर 1, customer is ready to pay. I'm discussing what are the features of a value adding activity. Customer is ready to compensate. The customer is ready to pay. Second, it brings a tangible change in the product. Okay. Raw material handling, is it value adding? No. Okay. Why? Because it does not bring a tangible change in the product. Accounting, is it value adding? Accounting, is it value adding activity? Does it bring a tangible change in the product? बोलिए. देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करो ना. वैल्यू एडिंग वो एक्टिविटी है जब परफॉर्म होती है तो प्रोडक्ट में टेंजिबल चेंज आता है. अकाउंटिंग से जितनी मर्जी अकाउंटिंग कर लें, क्या ये प्रोडक्ट में टेंजिबल चेंज लाएगा? नहीं लाएगा. मार्केटिंग, डज इट ब्रिंग अ टेंजिबल चेंज इन द प्रोडक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डज इट ब्रिंग अ टेंजिबल चेंज इन द प्रोडक्ट? से इट, डोंट बी रिलक्टेंट, कोई नहीं कुछ होगा. से इट, नो. Yes, that's true. Marketing is not a value-adding activity in many of the cases. Yes, if it is branding, it may add value, but simple marketing, Pepsi, Coca-Cola, कितने देर के बाद ऐड देते हैं? हर 5 मिनट के बाद. अब कस्टमर को कहीं नहीं पे करो इसके लिए, कस्टमर कहेगा मैं क्यों पे करूं, मेरे लिए तो ये वैल्यू-एडिंग नहीं है. Why should I pay for this marketing? ये तो आपको बेनिफिट हो रहा है, मुझे तो कोई वैल्यू एड नहीं हो रही. ठीक है, कस्टमर इज रेडी टू पे and it brings a tangible change. Third, it is done right first time. It is done right first time.
नाउ लेट्स सी, आप ये पॉइंटर प्रोड्यूस करते हैं, इसमें एक डिफेक्ट निकलता है और इसके ऊपर आपकी 100 रुपया एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है. डू यू थिंक यू कैन चार्ज दिस 100 रुपीज टू द कस्टमर? विल द कस्टमर पे यू फॉर दिस डिटेक्शन एंड करेक्शन? बोलिए, बोले, क्यों डरते, क्यों खौफ, किस चीज का है? बोले बाबर, बोलो. ये पॉइंटर प्रोड्यूस किया 1000 का है. टेंजिबल फिजिकल चेंज आती है प्रोडक्ट के अंदर. जी देखिए, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हर मशीन के ऊपर काम हो रहा है, हर मशीन के ऊपर जो काम हो रहा है वो प्रोडक्ट के अंदर एक टेंजिबल चेंज लेके आ रहा है. तो ऑल आर वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज. लेकिन वो जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो एयर कंडीशन में सारे बैठे, बड़े अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे बैठे काम कर रहे हैं, एक्सपेंसिव सैलरीज, दैट्स नॉट वैल्यू एडिंग. इंटरनल ऑडिट इतना, बट दैट्स नॉट वैल्यू एडिंग. कस्टमर कहते हैं मुझे क्या है, आप जितना मर्जी अच्छा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले लें, कस्टमर कहता है मैं क्यों पे करूं? ठीक है, क्यों? इट इज नॉट ब्रिंगिंग अ टेंजिबल चेंज इन द प्रोडक्ट. वेयर डू यू सी अ गुड अकाउंटिंग सिस्टम? Can you see this product and say, yes, this company has a good accounting system? No, it doesn't bring a tangible change. But the quality of raw material, tangible. That craftsmanship is bringing a tangible change. अब मैंने ये कहा कि 1000 रुपए में बना, इसमें डिफेक्ट आया, मैंने इसको रिमूव किया, 100 रुपए एक्स्ट्रा हो गया. कैन आई चार्ज 1100 रुपीज टू कस्टमर? कि जी वो 100 रुपया डिटेक्शन पे लगा, करेक्शन पे लगा, वो भी दें? देगा कस्टमर आपको? No, it is right first time. कस्टमर को मैं ये कहता हूं, you will always get the right product. Give me 1200 rupees. पहले 100 रुपए वो देने के लिए तैयार नहीं था, अब मैं उसे कहता हूं you will always get the right product. Give me 1200 rupees. Do you think customer will pay? Yes, right first time. वो कहेगा हाँ जी 1200 ले ले, कोई मसला नहीं. वो 100 रुपया देने के लिए तैयार नहीं था, something which is not right first time. वो 200 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है, where he says I get a reliable product. It is right first time. ठीक है बेटा? तो क्या 3 खासियतें हैं वैल्यू एडिंग की? फर्स्ट, कस्टमर इज रेडी टू पे. सेकेंड, it brings a tangible physical change in the product. Third, it is done right first time. अब जिस प्रोडक्ट में इसमें से एक भी मिसिंग है, जिस एक्टिविटी में एक भी फीचर मिसिंग है, what is that? That is non-value adding. That is non-value adding. Now, as an accountant, what is your job? Remove it. Remove that non-value adding. Get it out of your value chain system, because that is a cost for which the customer is not ready to pay. Get it out of that value chain system. As an accountant, why value chain analysis is important? Find out what is non-value adding. In this, if I'm getting newspapers, find out, is it giving me any advantage to my customer? If not, get it out. Okay. So, abhi aapne dekh liya, bada interesting. Accounting is not value adding. Can we remove it? Can we say, okay, we will not do accounting? बोलिए, can we remove it? Yes. ऐसी activity जो value adding नहीं है, लेकिन we still have to perform it, is value enabling. ठीक है? ऐसी activity जो value adding नहीं है और हमें फिर भी perform करनी है, that is value enabling. Marketing is value enabling. Accounting is value enabling. HR functions are value enabling. ठीक है? Material handling is value enabling. You got my point? अच्छा, अब इसके लिए असूल क्या है? सुने गौर से. वैल्यू नॉन वैल्यू एडिंग के लिए क्या कहा? एलिमिनेट. वैल्यू एनेबलिंग, अब प्रॉब्लम आ गया. एलिमिनेट नहीं कर सकते, परफॉर्म करना है. 2 असूल सीखें. 1, आउटसोर्स या ऑटोमेट. As an accountant, I have to outsource it. As an accountant, I have to get it automated. कोई बता सकेगा क्यों? Think as an accountant. Why would you like to outsource or why would you like to automate? ताकि
इसका मकसद है कि मिनिमम कॉस्ट पर परफॉर्म करें, क्यों कस्टमर पे करने के लिए तैयार नहीं है, उसने जो पे करना है हमने उसी में से इसको कवर करना है और प्रॉफिट जनरेट करना है। We can't remove accounting. Okay, automate. Like computer science, computers by accounting, eliminate that number of accountants. Eliminate the number of bookkeepers. Internal audit, get it outsourced. You see, what are you doing? Outsourcing क्यों करते हैं? Cost को reduce करने के लिए। अब ये बड़ा important सवाल है, मैं आप जवाब आपसे पूछने लगा हूं। Would you like to outsource something which is your strategic capability? बताइए। No, because that is your source of competitive advantage. You would like to outsource what? Which is not value adding, which is value enabling. कभी हम value adding activity को outsource नहीं करते। ठीक है, तो अब असूल सीख लीजिए। नॉन वैल्यू एडिंग एलिमिनेट, वैल्यू इनेबलिंग आउटसोर्स या ऑटोमेट। ठीक है, ओके। व्हाट डू यू थिंक इज द रूल फॉर वैल्यू एडिंग? उनके लिए क्या करें? नॉन वैल्यू एडिंग के लिए भी सीख लिया, वैल्यू इनेबलिंग के लिए सीख लिया, वैल्यू एडिंग के लिए क्या करें? अचीव कॉम्पिटेंसी एंड कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। ठीक है, वैल्यू एडिंग के लिए क्या करें? जो भी आपने मॉडल पढ़ा उसमें कॉम्पिटेंसी हासिल करो, एक्सीलेंस हासिल करो, and convert that into a strategic capability which is likely to give you a competitive advantage. समझ आई बात? तो देखिए, ये जो वैल्यू चेन का टॉपिक है ये कई डायमेंशंस में एग्जाम में जा सकता है। इसको स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी से भी मैच कर सकता है, इसको सिंपल वैल्यू चेन के पर्सपेक्टिव में रहते हुए भी आपसे सवाल पूछ सकता है। I made my point clear? ठीक है, अब हमारे पास टाइम कम है बेटा, सारा नहीं कवर कर सकूंगा। या ये आपके पास स्लाइड्स अवेलेबल होंगी, आप इसमें रन थ्रू कर सकते हैं। मैं जो चीज कवर करना चाहूंगा वो है व्हाट आर द लिस्ट ऑफ वर्ब्स यूज्ड। दीज आर 11 वर्ब्स यूज्ड। जब से बीएमएस या इसके पेपर आ रहे हैं, दीज आर द 11 वर्ब्स। ठीक है, ये फेसबुक पर ये क्योंकि अवेलेबल है मटेरियल, तो आप वहां से इसको देख सकते हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अटेम्प्ट द वर्ब। टॉपिक देख के एक्साइटेड ना हो क्या, ओ यस ये तो मुझे आता है, चलो जी अब वो आमद होनी शुरू हुई शायर की तरह, लिखते चले गए ए से जी जितना आता है। ये देखा है नहीं वर्ब क्या है, और ये भी नहीं देखा कितने वर्ब्स हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। और आप देखेंगे जब इसके माने अभी आपके सामने रख रहा हूं, कोई वर्ब एक दूसरे के स्कोप में नहीं आता, हर वर्ब का अपना माने है। और सॉल्व करते हुए ये देखो कि आपको उस वर्ब का माने पता था और आपने वो चीज की। लाइक डिस्कस, टेकिंग इनटू अकाउंट डिफरेंट इश्यूज एंड आइडियाज। आपने कोई कंक्लूसिव नहीं होना, जो भी डिफरेंट, यहां पर आपको क्वेश्चन के अंदर ओपिनियंस दिए होंगे, आइडियाज दिए होंगे, यू जस्ट हैव टू टेक इनटू अकाउंट ऑल दोस। अभी पहले सारा देख लीजिए, फिर हम इसको एंड करेंगे। फिर है स्टेट। स्टेट का माने क्या है? एक्सप्रेस समथिंग डेफिनेटली और क्लियरली। स्टेट हैज टू बी कंक्लूसिव। कहीं जी स्टेट, तो वट एवर यू हैव टू स्टेट, इट हैज टू बी कंक्लूसिव, स्टेटेड वेरी क्लियरली व्हाट इज योर फाइनल सोल्यूशन, व्हाट इज योर फाइनल ओपिनियन। जब डिस्कस आए तो आपने कंक्लूसिव नहीं होना, यू जस्ट हैव टू टेक इनटू अकाउंट डिफरेंट इश्यूज एंड आइडियाज, उसको एक्सप्रेसिव बनाना है। और जब स्टेट आए, यू हैव टू बी कंक्लूसिव, स्टेट समथिंग वेरी डेफिनेटली। इसी तरह आइडेंटिफाई तो हमने कई दफा देखा है, यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज 0.5 ईच। डिस्क्राइब, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट इन वर्ड्स। डिटेल, डिस्कस, और ये तकरीबन एक ही जैसा है, डिटेल, डिस्कस और डिस्क्राइब, इसमें मुझे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये तीनों एक ही, जस्ट टू एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल। इसी तरह डिस्कस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में क्या है? टू मेक समथिंग क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। एक्सप्लेन जहां भी दिया होगा ना, उसमें आपसे ये मतलब है कि हमने फैक्ट्स दे दिए इधर उधर, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, मेथड, उसको एक फॉर्म में ले आओ, एक लॉजिकल तरीके से उसको एक ऑर्डर में ले आओ, ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए।
एक्सप्लेन का सिनेरियो हमेशा इस तरह होता है कि एक कंजस्टेड फॉर्म में, हैपहैज़र्ड फॉर्म में फैक्ट्स दिए होते हैं, और जब आपको एक्सप्लेन किया जाए तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसको देखोगे, इसको रीफ्रेज करोगे और उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन को लेकर आओगे। तो जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, अपने आप से सवाल पूछो, हैव आई मेड इट क्लियर? हैव आई गिवन अ लॉजिकल एक्सप्रेशन व्हाट इट मींस? तो दैट मींस यू हैव अटेम्प्टेड दिस वर्ब एक्सप्लेन। अगर है कि यू हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल, सारे उसके डिटेल में आप उसके जा रहे हो, दैट इज आइदर डिस्कस, डिस्क्राइब, अब एवेल्युएट। ये बहुत गौर से सुने। और अब ये जो एसपीएम का फॉर्मेट है, इसमें ज्यादातर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एवेल्युएट आ रहा है लफ्ज। इससे पहले बीएमएस में मैंने आई हार्डली एवर सॉ दिस वर्ब एवेल्युएट, लेकिन अब जब से ये दो चैप्टर्स आए हैं तो इसके लिए एवेल्युएट मींस यू हैव टू डू सम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस एंड यू हैव टू, ये देखिए इसमें, टू डिटरमिन और फिक्स द वैल्यू ऑफ समथिंग। किसी चीज की वैल्यू को आपने डिटरमिन करना होगा और उसकी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में उसको एक्सप्रेस करना होगा, वेदर राइट और गुड, हाई और लो, देयर हैज टू बी अ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बेसिंग योर डिसीजन। एवेल्युएट का लफ्ज का मतलब ही ये है कि यू विल डू सम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, यू विल एक्सप्रेस योर थिंग इन अ वैल्यू। If you have not given any value for, you have not evaluated. Then recommend, यहाँ दो verbs यूज हैं, एक है recommend और एक है suggest। फर्क क्या है? Recommend is going to be more formal and suggest is simple opinion. Recommendation हमेशा किसी authority की निस्बत से आ रही होगी, like board of directors. Suggestion हमेशा एक opinion होगी, वहां किसी authority का जिक्र नहीं होगा। तो जब recommend का लफ्ज आए तो देखिए किसकी निस्बत से रिकमेंड करना है। जब सजेशन का हो तो डोंट वरी अबाउट द अथॉरिटी, देन इट इज अ जनरल ओपिनियन दैट यू हैव टू स्टेट। अच्छा, अब ये देखिए एनालाइज, और यहां लफ्ज देखें मेथोडिकली, और से सुन ले। जब सवाल के अंदर एनालिसिस का लफ्ज हो, फॉर श्योर किसी मॉडल को अप्लाई करना, जैसे कल किया था ना गार्नियर। एनालाइज का मतलब ही है मेथोडिकली। मेथोडिकली मींस यूज सम मॉडल, यूज सम फ्रेमवर्क। उस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी सजेशंस दें। ठीक है, तो एग्जाम के लिए याद रखो, अगर उसने वर्ब यूज कर दिया एनालिसिस, नाउ इट शुड नॉट बी जनरल, थिंक व्हिच मॉडल आई कैन यूज। देन एडवाइस, अगेन एडवाइस का लफ्ज उस वक्त होगा जब आपके पास डिफरेंट ओपिनियंस होगी एंड यू हैव टू बी डेफिनेट व्हिच कोर्स ऑफ एक्शन। एडवाइस का वर्ब उस वक्त यूज किया जाता है जब उसने 3-4 ऑप्शन दे दी और आपसे कहा जाए बताए व्हिच वन इज द डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन। इन वर्ब्स को घर जाके दोबारा देखिएगा, और फिर बेशक यू कैन ऑलवेज गेट मी बैक टू माय व्हाट्सएप। दोज हु आर ऑन द ऑनलाइन, कैन यू काइंडली नोट माय व्हाट्सएप नंबर, and you can always get back to me on this WhatsApp number, those who are online and those who are here, and you can always get back to me on this number. Send me your solutions. You can always talk to me about these verbs again. The number is 0334 42 66 498. 0334 42 66 498. Send me your solutions. I'll send you your solutions digitally marked. Get me back on these verbs. अब अगर मैं areas identify करूं तो ये जो yellow में हैं, ये आपके important areas हैं इस बार. This is based on past papers. This is based on my assessment. And remember, I'm not asking you to do spotting. कि जी सर ने कह दिया था हम तो अब यही पढ़ेंगे, और उसके बाद मुझे लीगल केसेस नोटिसेस आते हैं कि जी आपने कहा था वो तो आया नहीं। आई एम जस्ट गिविंग यू माय ओपिनियन माय डियर, दैट्स इट। बट यू मस्ट गो थ्रू, मैंने पहले दिन कहा था यू मस्ट गो थ्रू द एंटायर कोर्स, बट माय ओपिनियन इज बिजनेस एनवायरमेंटल एनालिसिस जो आज हमने किया है, कैपेबिलिटी एनालिसिस एंड कंपैरेटिव स्ट्रेटजीज, और 9th चैप्टर में दैट इज रिस्क कंट्रोलिंग। अभी तक दोनों जो अटेम्प्ट्स एसपीएम किए हुए और इससे पहले जो विंडो, उसमें रिस्क एनालिसिस नहीं आया। ये इतना गैर जरूरी चैप्टर नहीं है,
मेरे नजदीक इस बार ये जो रिस्क मैनेजमेंट का ये चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट, ये 4 चैप्टर्स, एंड मार्क माय वर्ड्स, दिस इज 30% एट स्टेक। आईटी का हर सूरत में है, एंड दिस इज 15 to 20 मार्क्स। ये दोनों मिलाकर 50% है। इसके बाद जो थर्ड मॉड्यूल है, इसमें से एचआर, अभी तक देख लीजिए, एचआर पिछली बार नहीं आया था। देयर इज नो रीजन एचआर को ना पूछा जाए, एब्सोल्युटली नो रीजन। पिछली बार पता नहीं, लेकिन इस बार ये एचआर में से ये जो 2-3 चैप्टर्स हैं शुरू के, 2 चैप्टर इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसके बाद जाइए मार्केटिंग एसेंशियल्स, उसमें से जरूर आना है। फिर ये दोनों चैप्टर्स थ्रो अवे प्राइसेस हैं यार, ये 15 नंबर का, 15 से 20 नंबर का आना है। आप के लेवल पर जितनी आपकी अकाउंटिंग नॉलेज है, जितनी रेशियो एनालिसिस का है, ये थ्रो अवे प्राइस मार्क्स है। अगर ये 3 एरियाज में एक्सेलेंस कर लें तो सक्सेस बहुत नजदीक होती है। वो 3 क्या है? मॉड्यूल ए, आईटी एंड दिस वन, और फिर एक मार्केटिंग का चैप्टर, बहुत आसान है। ये 4 चैप्टर्स आपको बिल्कुल सक्सेस के पास ले आएंगे। इसका ये मतलब नहीं बाकी छोड़ दें। इसी तरह जो लास्ट मॉड्यूल है बेटा, उसमें से चैप्टर 18 और चैप्टर 20, चैप्टर 20 में से वो एथिकल रेजोल्यूशंस को हर दफा पूछ रहा है। एंड फॉर अकाउंटेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एथिकल इशू एंड हाउ वी कैन रिजॉल्व दैट इशू। सो 18 and 20 इज इंपॉर्टेंट। सीएसआर पर अभी तक उसने सवाल नहीं पूछा इसमें, तो सीएसआर पर सवाल आ सकता है, जैसे हमने कल किया था, क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसी तरह उसके एथिकल रेजोल्यूशन के ऊपर। तो ये जो मैंने येलो में मार्क किए हैं, you can always go back to Facebook and click that link, go to these materials, and you could always figure out what are the important areas. Okay, so with that, I will end this session. I'm afraid we are short of time, but thank you very much, especially ये जो रोज आते रहे and those who've been online. You've been very patient, and hopefully I was able to add something to it. So stay in touch so that we can add more value. God bless you. Dear students, today we have completed exam-focused revision sessions of CFAP 3, Strategy and Performance Measurement. There is no doubt Sir has delivered the course at utmost level. He has not only revised the syllabus, but also made it simple to understand. It is evident that Sir has given his best in such short period of time. Please give him big round of applause. Sir has also shared his WhatsApp number, which I will recall here again, 0334 4266 You can contact Sir on this number and send your solved paper so Sir can check this out. Also, students of MSA2, we will hold MSA2 Management Professional Competence session on May 13, 2023 from 11 a.m. to 2 p.m. In the end, sir, we have certificate and shield as token of appreciation for you, sir. Please, sir.